Another good delivery by Vishesh. Coming to bowl is next. What a good pace this guy has got. Quick single taken by Kailash and Sanjeev, and this time an overthrow as well. They'll come for the second really quickly. These two are really good runners between the wickets. Wonderful start by Sanjeev and Kailash. Sanjeev opens his account. That's a good cat and mouse game happening here in the first over. Jfsc Tsl bowling really well. Almost got Sanjeev Sularia run out there on the fourth delivery. Bowling a really good one after that. A couple of runs taken. Coming to bowl the next, the last of this over. Oh, and the perfect delivery outside the off stump. Good length. Trying to cut that, but that was really quick. Not easy for any batsman to play those kiddie deliveries, and that's the end of the first over. The score is 4 without loss. Sanjeev Sularia and Kailash Bhatt both have opened their account, but that was a wonderful over by Jfsc Tsl, known for his stunning bowling in this circuit. And the next over about to be bowled by Kashif. Kashif Sheikh, this first over, starting his first delivery. That's a short delivery and Kailash misses that, trying to hit the punch towards the covers but missed it. He needs to pitch it up, this guy, but Kailash is a very dangerous batsman. We've seen him play some really wonderful innings in the last TSL. He's one of those batsmen who starts well and keeps on going well as well, and trying to take the quick single, but the keeper doing really well there. Fumbled initially but came back really well, did not allow the batsman to take that single. That was a good delivery by Kashif, pitched in line in the right channel as well, just outside the off stump. Kailash trying to hit the big shot but wasn't playing the correct line, so just a dot that time. Coming into bowl the next one, Kashif Sheikh. He's a wonderful all-rounder. That's a good shot by Kailash, straight to the fielder. He misses that, and a quick single taken, trying to come back for the second. They've taken the second easily. Poor fielding by the Alpha Panthers fielders. And Kailash Bhatt is really quick, and look at his presence of mind as well. Was waiting for the opportunity to take the second run, and Sanjeev Sularia supporting him really well. So 2 runs added to the tally. Kashif Sheikh not bowling where he normally bowls to the batsman. He's a very good bowler with a lot of potential, but he's bowling slightly short of length, which is not a good idea against these players. They've got really strong bottom hand and can hit the ball severely square of the wicket if you bowl short to them. And this time that's a good delivery, trying to take the quick single. And a very good single taken by Kailash. Will they come back for the second? But this time Kailash probably had backed up too much. That was the reason he said no for the second. And a quick single taken by Kailash. Sanjeev back on strike. Kashif Sheikh is bowling well, but he needs to pitch it up, further up. That is what I believe. Sanjeev Sularia is a great technician. We all know his ability. Oh, and what a delivery. This is the one which I was talking about. And Kashif Sheikh bowling wonderfully well. A swinging delivery outside the off-stump. Just have a look at that. Brilliant stuff by the pace bowler here. He's got a side-on action and bowls really well. Coming to bowl the next delivery. Another good run taken this time. These are really quick runners between the wickets, both of them. And that's the end of the second over. The score is 8 without loss. A good over by Kashif, just 4 of the over.
So 8 for no loss. We'll be back after a quick commercial break. Stay tuned, viewers. Parasvira, the new bowler, coming into bowl his first over and the third of the innings. On strike is Sanjeev Sularia. Sanjeev is the captain of Anonymous Knights and he led the team to victory in this tournament last year. Parasvira to Sanjeev, short delivery and trying to cut that but missing that. That's a wide. So he starts with an extra. Oh, that's a great comeback by the bowler. Wonderful delivery and really quick running by both the batsmen. Just a single towards the short mid wicket. That was a very good delivery. In the air and he's gone. Wow, and Parasvira striking in his first over, the first wicket down. Brilliant work there by Paras. Just have a look at the replay. And this is Kailash Bhatt, who's going back to the pavilion without too big a contribution. Just have a look at that catch, a simple one taken by Karan at mid-off, and he was playing that on the up. But that was a really good delivery by Parasvira, pitching on the right length, and that was a pacey delivery too. Should have stayed there and probably tried to hit it straight down the ground, but unfortunate for the batsman, he gets caught in the mid-off region. The first wicket for Anonymous Knights is down on the score of 10 for 1. That's a wonderful start by Parasvira. The captain of Anonymous Knights would be really happy, Yash Doshi. He changed the opening bowler immediately after only his first over, and Parasvira responds to the call from the captain, just gives him a very important wicket in the form of Kailash Bhatt, who's now back in the pavilion. Anush Tiwari is the new batsman. Parasvira, that's a wonderful delivery to the new batsman. Sanjeev trying to take the quick single. Chance of a run out again. Oh, and he would have gone. And don't know why he's running so recklessly there. The captain should be a bit patient. He's such a wonderful leader, probably a bit panicky at the moment after the loss of the first wicket. But that was not at all a run. Could have been 2 down. That was a poor call, and he's very lucky to be there. And the second time this has happened, so
Probably they'll have to start hitting the stumps if they want to see the back of the captain of Anonymous Knights. Paras coming into bowl his next delivery. That's a good shot played by Anuj, and and in the gap, but there's a fielder out there, just a single. But that was a wonderful shot, and Anuj Tiwari, we all know what kind of a batsman he is. A wonderful cricketer to have you in your team, and he scored some really important and big runs in the last season of TSL. Scored a century as well, if you remember correctly. Wonderful batsman to have in the top order. Generally comes at the number 3 position. That should be a wide again. Parasvira not able to control the swing. Another wide. So 2 extras given in this over. The captain would not be angry. The kind of wicket that he has provided in the form of Kailash, but these 2 extras would definitely be pardonable. Jfsc Tsl on strike. Paras to Sanjeev. Wonderful piece of bowling, and this time not in a comfortable zone. The batsmen out there, bowlers have been really up to the mark. Absolutely brilliant stuff there by the bowlers of the Alpha Panthers. That's a wonderful shot. Should be the first boundary in this match. What a shot that is. Wow. That was a short delivery, and given the treatment, just have a look at that. And he's so good at that shot. Cut brilliantly towards the sweeper for a boundary. No chance for any fielder. So that's the end of the 3rd over, and he finishes the over in style. Sanjeev Tsl, the captain of Anonymous Knights. And the score after 3 overs is 16 for 1. Just have a look at that wonderful shot played by Sanjeev on the last delivery of the previous over. What a shot! And this is the hallmark of a great player. He might be struggling with the swinging delivery, which normally every batsman struggles if the ball is swinging. But when there is room for scoring runs, immediately he pounces on the opportunity, and he will have to stay for a long period of time here. They've lost the first wicket really quickly. Kailash but going back to the pavilion in just the 3rd over, and they've got a very solid batting lineup as well, so it's going to be a wonderful match for sure. No matter who wins it, both these teams are really strong, and this is going to be a cracker. Kashif Sheikh coming into bowl his next over. He started well. Oh, and that's a good delivery. And he's missed that. Should be a boundary. Oh, and the ball is stopped there. They'll take only a single, so just a bye. A good start by Kashif, but a run given by the wicket keeper there.
Kashif with his next delivery. Oh, this time in the air! This is a wonderful piece of bowling by Kashif Sheikh. He was trying to pull that, but that was really quick for him. Just have a look at that. Probably pulled it slightly earlier than, and probably was late, not early. Should have pulled that just a second earlier. Dot delivery. Oh, and this time a brilliant delivery. Genuine edge, just a single towards the third man. Kashif Sheikh is bowling some really good balls out there, and he's found the spot really well. That's what he needs to do consistently. Just keep on bowling the fullest delivery, that too within the stumps, and let the ball do its job. In the air, played brilliantly towards the square leg. Should be a boundary. What a shot that is. And this is the class of this batsman. Anuj playing it really well. That was on his pads, and it's a saying in cricket, never bowl to any Indian batsman on their pads. This was not completely on his pads, but then he flicked it brilliantly with the help of his wrists. Took it from middle stump, and what a shot that was. A treat to watch. Kashif coming into bowl his next delivery. Oh, and this is the one that we were talking about. Needs to pitch that up consistently so that he could pose a lot of trouble to the batsman. This time exactly the same happened, and missed by Anuj Tiwari. Was trying to hit the big one, did not connect. This is the last delivery of this over. Oh, what a shot that is, and this is the power of this batsman. A huge six towards the long on boundary. What a shot. That was pitched up and given the treatment. Kashif Sheikh missing the length this time. That was actually a wonderful shot. That was not a bad delivery, to be honest. He bowled it full, but he should have been bowling it within the stumps. Probably that was too much outside the off stump for his comfort. That was actually Anuj's comfort, the kind of shot that he hit. Brilliant batting by Anuj Tiwari. Kashif allowing him to free his arms, and Anuj making no mistake that time. What a shot that was. Huge six towards the long on. The score after 4 overs is 28 for 1. Paras Vida coming into bowl his next over. On strike is the captain Jfsc Tsl. Oh, and he's bowling some really good deliveries. He's trying to take the quick single. Succeeds. Sanjeev, good backing up by Anuj as well. Really good understanding between these two batsmen. And one thing that we've noticed with the Anonymous Knights, not only in this season but also in last season, was the running between the wickets. It was simply a notch above the rest. The kind of calls that they make, the kind of understanding that their batsmen have within themselves, within the group, between themselves, is absolutely wonderful. A shot on his bowled him, he's cleaned him up. What a delivery by Paras Vida. For a moment it was quite short, but he bowled some really quick deliveries, and this time Anuj Tiwari bamboozled with the pace here. Just have a look at that. Oh, and this is not a bad delivery at all. Takes the off stump. He should have played that with a straight bat. Was trying to play across the line, and probably that was the reason he lost his wicket. Paras Vida is on fire. He's taken 2 now. And the second wicket down for Anonymous Knights. 29 for 2 they are now. What a ball by Paras Vida, that one. Anuj Tiwari starting off well, but Alpha Panthers on fire. They've just destroyed the top order in the first few overs. And Anuj and Kailash, both wickets being taken by Paras Vida, and what a delivery that was. A wonderful piece of bowling by the pace bowler. Just have a look at that. That was slightly short, but he was not prepared for that. He thought this will bounce.
and he would be able to pull that, but he should have played that on the merit of the ball with a straight bat, but he tried to play it across the line, and that was the reason he lost his wicket. But this is really good bowling by Paras Vida. Full credit goes to this wonderful bowler. And what a start for Alpha Panthers. They've got two very important wickets, huge run getters of the last season, both of them in the pavilion now. Satish Yadav is the new batsman, another dangerous batsman, and these guys are having a really strong batting lineup, and this guy is a very dangerous batsman for sure. They will have to take his wicket, else the match could go away from their hands really quickly. He's a genuine stroke player. This guy hits the cricket ball really hard, and and he almost got him there, but probably bat. Wonderful piece of bowling by Paras Vida. Just have a look at that. Perfect length and line to the new batsman. Couldn't have been a better way to start against the new batsman. Wow, that was really nice to watch. That's what happens with pace bowlers. Once they start taking the wickets, their body heats up really soon, and the engine starts rotating really fast. This time in the air again. There's a fielder out there at long on, just a single. Don't know whether this was a catch if the mid-on was there. Probably not. Would have cleared him. And this is the 5th over of the first innings, and we'll be presenting the Hindi commentary from the next over. As mentioned earlier, the Super League TSL does provide Hindi commentary as well during the match. In the air. And he's missed that. Should be a boundary. Will be a boundary. Could have been a catch there, it seems. But he's missed that completely. And Paras Vida not happy about it, and he shouldn't be. Just have a look at that. That was a good delivery. That was in the air. And probably that was not a catch, but definitely could have been stopped. So another boundary added to the tally. Just one delivery left in Paras' second over. He's taken 2 wickets already in his spell till now. A quick single this time to end the over. The score after 5 overs is 35 for 2. And we'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. स्वागत करते हैं अपने सभी दर्शकों श्रोताओं का हिंदी कमेंट्री में। इस टीएसएल के बेहतरीन मैच में क्या शॉट लगाया है, जबरदस्त। संजीव सुलारिया फॉर्म में दिख रहे हैं आज। शुरुआत में थोड़ी सी चूक हुई इनसे, 1-2 बार फिसले भी रन लेते समय, लेकिन ये खराब शुरुआत सौरभ की जो छठा ओवर करा रहे हैं। और मैं शालीन गुप्ता हिंदी कमेंट्री की तरफ स्विच कर चुका हूं। बेहतरीन शुरुआत ओवर की, कट किया उसे डीप पॉइंट के क्षेत्र में 4 रन के लिए। संजीव सुलारिया को आप ऑफ स्टंप के बाहर नहीं दे सकते, ये इतने खतरनाक बल्लेबाज हैं। ये छोटी गेंद अगर बाहर की गेंद होगी तो प्रहार करेंगे ही, और अमूमन हमने देखा है कि वो प्रहार चौके की तरफ ही जाता है और सीमा रेखा के पार ही जाता है। सौरभ अगली गेंद लेकर आते हुए, बढ़िया गेंदबाजी इस बार विकेटों के बीचों बीच खिलाई। दूसरे रन के लिए वापस आ रहे हैं, क्या यहां पर रन आउट का एक मौका मिलेगा? जी नहीं, 2 रन तेजी से ले लिए और बहुत ही बेहतरीन रनर हैं
क्या दौड़ते हैं विकेटों के बीच में, जबरदस्त धावक संजीव सुलारिया। कप्तान तो हैं ही बेहतरीन, पिछली बार के विजेता रह चुके हैं द सुपर लीग में TSL, और इस सीजन में भी कि कप्तानी देखने योग्य होगी, इसमें कोई हमें दो राय नहीं है। आगे बढ़कर खेलना चाहा, बेहतरीन शॉट लेकिन सीधे इस बार, और ये आउट। बहुत ही बेहतरीन क्षेत्र रक्षण। ये क्या कर रहे थे यहां पर, रन लेने के लिए जल्दी कर दी फिर से। क्या बेहतरीन क्षेत्र रक्षण है, क्या थ्रो है, वाह। ये देखिए आगे बढ़कर आए और बहुत बड़ा विकेट गिरा है यहां पर, बेहतरीन यहां पर क्षेत्र रक्षण, और क्या थ्रो है, वाह। सतीश यादव सिर्फ विकेटों को बिखरते हुए देख सके वहां पर, और अब उन्हें पेविलियन की तरफ वापस जाना पड़ेगा। और बहुत ही खराब ये निर्णय संजीव और सतीश का इस रन को लेने का, और तीसरा विकेट गिर चुका है यहां पर 41 के स्कोर पर। एक बहुत बड़ी सफलता यहां पर अल्फा पैंथर्स को। बेहतरीन शॉट यहां पर आप देख सकते हैं, कवर्स की दिशा में खेला हुआ शॉट, और क्या जबरदस्त क्षेत्र रक्षण है। अच्छे शॉट पे अगर आप इस तरह आउट हो तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, एक दल के तौर पर आपको खराब लगेगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट, सतीश यादव ऐसे बल्लेबाज हैं जो पूरे खेल का रुख मोड़ सकते हैं, और इस बार वो ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि रन आउट हो गए हैं। इन्होंने बस नाइट्स खासी मुश्किल में 41 पर 3। मिडिल ऑर्डर भी यहां पर देखा जाए तो एक्सपोज हो चुका है, एक विकेट मिडिल ऑर्डर का भी जा चुका है, और ऊपरी क्रम से संजीव सलारिया अभी भी टिके हुए हैं। हालांकि मध्य क्रम के बल्लेबाजों में सतीश यादव वापस जा चुके हैं, विशाल पांड्या हैं नए बल्लेबाज, सौरभ उन्होंने अभी तक अच्छी गेंदबाजी कराई, हालांकि चौका एक खाया उन्होंने पहली गेंद पर, छोटी गेंद डाली थी उन्होंने। इस बार अच्छी गेंदबाजी, फिर से कवर्स की दिशा में खेला, लेकिन इस बार रन लेने का सोचेंगे भी नहीं। पिछली बार सोचा था तो उन्हें पता है क्या हुआ था, 41 पर 2 से 41 पर 3 हो गए थे। और ये कैच छोड़ा यहां पर, हाथ का कैच, और ये छोड़ दिया। और ये बेहतरीन गेंदबाजी, कैच छोड़ दिया पिछली गेंद पर, तेज शॉट था लेकिन हाथ में थी गेंद, ले सकते थे, और अगर ये कैच हो जाता तो इन्होंने नाइट्स बहुत बड़ी विपदा में आ जाते। और ये ओवर की समाप्ति 6 ओवर 41 पर 3।
संजय जोशी आए हैं अपना पहला ओवर लेकर। 6 ओवर में 41 रन का स्कोर है 3 विकेट के नुकसान पर। संजीव सुलारिया स्ट्राइक पर। बेहतरीन शुरुआत गेंदबाजी की संजय द्वारा, कट करने का प्रयास लेकिन ये निकल गई। एक बढ़िया शॉट इस बार, हालांकि एक ही रन मिलना चाहिए। स्वीपर कवर है वहां पर। एक अच्छा शॉट फाइन लेग की तरफ। एक रन तेजी से लिया वापस। संजीव एक बार फिर से स्ट्राइक पर। बढ़िया गेंदबाजी संजय जोशी द्वारा। बाएं हत्था गेंदबाज हैं, बेहतरीन गेंदबाजी डाल रहे हैं, फ्लैटिश ट्रैजेक्टरी रख रहे हैं। और ये हवा में खेला हुआ शॉट, लेकिन एक ही मिलेगा। लॉन्ग ऑफ की दिशा में गया 1 रन के लिए। करण ने बेहतरीन क्षेत्ररक्षण किया वहां पर। रन रेट यहां पर थोड़ा सा कम हो गया है विकेट गिरने की वजह से। और 3 महत्वपूर्ण विकेट ले चुके हैं अल्फा पैंथर्स यहां पर एनोनिमस नाइट्स के। कप्तान यश दोषी खासे खुश होंगे, प्रसन्न होंगे अपने गेंदबाजों के की मेहनत से, गेंदबाजी से। और ये ओवर की समाप्ति 7 ओवरों के बाद स्कोर है 44 पर 3। और एक छोटा सा विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। सागर आए हैं नए गेंदबाज। क्या बेहतरीन शुरुआत सागर की, और पहली गेंद अंदरूनी किनारा लगा और शॉर्ट फाइन लेग की तरफ गेंद गई। संजीव ने रन लेने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर क्षेत्ररक्षक पहले से ही तैनात था। डॉट गेंद यहां पर। अगली गेंद लेकर आते हुए सागर, और आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, और ये आउट। क्या बेहतरीन गेंदबाजी है, लालच दिया वहां पर और जाल में फंसाया, छका दिया पूरी तरह। और स्टंपिंग आउट आप देख सकते हैं। चौथा विकेट भी गिरता हुआ। एनोनिमस नाइट्स खासी मुश्किल में अब कि कप्तान वापस जाते हुए। ये देखिए बेहतरीन गेंदबाजी, और विकेट कीपर को ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा यहां पर, सिर्फ गिल्ली की तरफ हाथ को छुआया और सागर ने दूसरी गेंद पर इतना बड़ा विकेट अर्जित किया है और अपने कप्तान को एक बेहतरीन सफलता दिलाई है। 44 पर 4 अब
स्कोर हो गया है। और संजीव सुलारिया कप्तान थे, कप्तान हैं एनोनिमस नाइट्स के दल के, वापस जाते हुए पेवेलियन की तरफ। 44 पर 4, 7.2 ओवरों में रन रेट भी अब सिर्फ 6 रन प्रति ओवर पर आ चुका है। और अल्फा पैंथर्स की यहां तारीफ करनी होगी, नहीं बेहतरीन बल्लेबाजी क्रम को उन्होंने अभी तक धराशायी करके रखा हुआ है। 44 पर 4 बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कहेंगे। और ये अपील कर रहे हैं, और ये आउट, पांचवा विकेट भी आउट। वाह, तारीफ करनी होगी यहां पर सागर की, नए बल्लेबाज को आते ही वापस भेज दिया। ओमकार नंदा पता भी नहीं चला कब आए और कब चले गए। एक ही गेंद उन्होंने खेली पहली, और पहली गेंद पर आउट। 44 पर 5, आधी टीम वापस जा चुकी है यहां पर, और बहुत ही आसानी से यहां पर अंपायर ने आउट दिया उन्हें, और था भी आउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीछे खेलेंगे आप अगर बाएं हथा गेंदबाज को तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और 44 पर 5 हो गया है इसको 7.3 ओवरों में। सागर ने 2 गेंदों पर 2 विकेट लिए हैं, और क्या यहां पर कप्तान यश दोषी उनकी हैट्रिक के लिए अब क्षेत्र रक्षण लगाएंगे, देखना है। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, तारीफ करनी होगी यहां पर सागर की। आपको रिप्ले दिखाएंगे, ये देखिए। जी हाँ, ये विकेटों के सामने ही। नए बल्लेबाज ऋषि अरोड़ा आए हैं, और 7वें नंबर का बल्लेबाज 8वें ओवर में ही आ चुका है। इससे पता चलता है कि अल्फा पैंथर्स ने क्या जबरदस्त गेंदबाजी दिखाई है। सागर की हैट्रिक गेंद, बढ़िया गेंदबाजी और बेहतरीन ड्राइव। एक ही रन मिलेगा हालांकि, तारीफ करनी होगी यहां पर सागर की। पहला ही ओवर इनका और धराशायी कर दिया है मध्यक्रम के 2 बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को। 2 गेंदें अभी भी बची हैं, तो मौका है अभी भी एक और विकेट चटकाने का। 45 पर 5 हो चुका है, सन्नाटे में चला गया है एनोनिमस नाइट्स का दल। कितनी बढ़िया शुरुआत दी थी, उसके बाद अचानक से ही एक साथ विकेट्स गिरते हुए, और खासे दबाव में होंगे अभी दोनों बल्लेबाज, क्योंकि इन्हें ना ही एक बड़ी साझेदारी बनानी है, हालांकि इसके अलावा उन्हें रन रेट का भी ध्यान रखना है, स्कोर को भी आगे बढ़ा के ले जाना है। बेहतरीन गेंदबाजी और बहुत बढ़िया यहाँ पर बल्लेबाजी भी। क्या बेहतरीन तरीके से उसे फॉरवर्ड डिफेंस किया ऋषि अरोड़ा ने, और ओवर की समाप्ति बहुत ही सफल ओवर है सागर का। ये देखिए क्या बेहतरीन तकनीक के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं ऋषि। 2 विकेट पहले ओवर में लेकर एनोनिमस के स्कोर को 46 पर 5 पे ले आए हैं सागर। यहां पर 8 ओवर में 46 रन और 5 विकेट। लेकिन इस टीम के लिए आप कुछ भी कभी भी नहीं इन्हें गेम से बाहर रख सकते हैं। इस टीम के लिए कभी भी आप ये सोच नहीं सकते कि ये टीम पूरी तरह गेम से, खेल से बाहर हो जाएगी। एनोनिमस नाइट्स की खास बात है, ये पिछली बार के विजेता हैं। ये ऐसे ही विजेता नहीं बन जाते हैं किसी भी टूर्नामेंट के किसी भी स्तर पे, और ये तो बहुत ही बेहतरीन स्तर है। संजय जोशी आए दूसरा ओवर लेकर, बेहतरीन शुरुआत, 1 रन दिया हालांकि तेजी से। ऋषि वापस स्ट्राइक पर। विशाल पांडे वापस,
1 रन लेते हुए और ऋषि को स्ट्राइक पर लाते हुए, ऋषि स्ट्राइक पर हैं। संजय जोशी की अगली गेंद, बढ़िया शॉट ऋषि का और 1 रन ले लिया आसानी से। और खासे आत्मविश्वास के साथ खेल रहे हैं ऋषि, और खास करके ऑफ स्टंप पर। और ये पीछे जाकर खेलने का प्रयास, लेकिन मेरे ख्याल से ये उचित तरीका नहीं है। आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर, बाएं हत्था स्पिनर पर पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे ही खेलिए जितना हो सके। जैसे आप पीछे जाते हैं, गेंद तेज़ी से आने की कोशिश करती है, और कभी कभी अगर बल्ले पे ना लगे तो डंडा भी उड़ सकता है। बढ़िया शॉट, गैप में खेला है, क्या है, चौका होगा ऐसा लग रहा है। 4 रन होगा, जी हाँ 4 रन। कोई मौका नहीं हुआ लॉन्ग ऑफ की कि क्षेत्र रक्षक को। बेहतरीन शॉट बैकफुट पर जाके इस बार, और ये खासी छोटी गेंद डाली तो पूरा मौका और समय दिया वहां बैकफुट पर जाने का। और 4 रन के लिए विशाल पांडे ने बेहतरीन शॉट लगा दिया। इनका पहला चौका है ये विशाल का। संजय जोशी की अगली गेंद और स्वीप करने का प्रयास, एक भी रन नहीं हालांकि। पैड पर लगी गेंद और बेहतरीन शॉट, ये बड़ा छक्का हो सकता है। जी हाँ 6 रन, शायद कैच भी हो सकता था। यहां पर चूक हो गई है वहां पर क्षेत्र रक्षक से, तारीफ करनी होगी। ये देखिए, जी हाँ ये पीछे से लेते तो ये कैच था। इतना आगे क्यों आया समझ में नहीं आया। कौन सा वाला क्या भाई, ये फर्स्ट वाला है, अब सेकंड में डालो, एक मिनट। 6 रन के लिए इस गेंद को बाहर भेजा, और 9 ओवर के बाद स्कोर है 58 पर 5। बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर विशाल पांडे की। 13 पर आ गए हैं सिर्फ 11 गेंदों के बाद, तारीफ करनी होगी इनकी। और ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 9 ओवर के बाद स्कोर 58 पे 5। और 1 रन लिया आसानी से। सागर का अगला ओवर, इनका दूसरा ओवर। पहले ओवर में 2 विकेट चटका कर तहलका मचा दिया था इन्होंने इस पारी में। उनसठ पर 5, और एक बढ़िया गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई। पहले तो शायद उसकी तरफ जा रहे थे, लेकिन बाद में छोड़ दी उन्होंने गेंद को जाने दिया। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, हालांकि 1 ही रन होगा। सिर्फ 1 रन इस बार। मिड विकेट की तरफ खेला हुआ शॉट, डीप मिड विकेट ने अच्छा क्षेत्र रक्षण किया, और जस्ट सिर्फ 1 रन। बेहतरीन गेंदबाजी। ग्लीन लेकर आते हुए बेहतरीन गेंदबाजी, और सागर की तारीफ करनी होगी। पूरा लालच दे रहे हैं बड़ा शॉट खेलने का, और ऋषि की भी तारीफ करनी होगी। लालच में फंस नहीं रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर अभी 1 विकेट गिर जाता है तो ये पारी पूरा 20 ओवर भी चलेगी कि नहीं कहना मुश्किल हो जाएगा। 7वें नंबर के बल्लेबाज हैं, तो
इन्होंने आज उम्मीद नहीं की होगी, अपेक्षा नहीं की होगी कि इतनी जल्दी इनकी बैटिंग आएगी आज, लेकिन बल्लेबाजी करने का मौका 8वें ओवर में मिल गया इन्हें। हवा में खेला हुआ शॉट, 1 रन ही होगा हालांकि, लॉन्ग ऑन पर बढ़िया क्षेत्र रक्षण। और ओवर की समाप्ति, सागर का दूसरा ओवर, एक और बेहतरीन ओवर, 3 रन सिर्फ उस ओवर में, और स्कोर हो गया है 10 ओवर के बाद 61 रन पर 5 विकेट। और अब हमें आज्ञा दीजिए कि हम वापस अंग्रेजी कमेंट्री की तरफ अग्रसर हों और आपके समक्ष अंग्रेजी कमेंट्री प्रस्तुत करें। And we are back live. Puneet Gambhir is the new bowler. This is the 11th over in the inning after the drinks break. Puneet has been given the ball to start his spell. That's a good shot played towards
Wide of long off, an easy couple taken by these two. Trying to play the big shot, not succeeding. A dot delivery. Another wide this time, and should be a boundary, so 5 runs gifted. Poor delivery, wide outside the off stump. You can't just gift runs like that. Just have a look at that. Puneet Gambhir just not able to control the swing in the ball. 5 runs gifted. This could be really expensive over for him. He's bowled only 3 deliveries and already 8 scored in this over. Puneet with his next delivery. Oh, and this is a wonderful piece of bowling. Great comeback by the bowler. The perfect line and the perfect length, and the wicketkeeper doing a great job. Was ready for the stumping, but probably he was already inside the crease. This time in the air, that's a good shot. Should be an easy couple there. The captain Yash Doshi's on the boundary line. Let's sweep a out. 2 runs added to the tally. So Vishal Pandey is playing a really good hand. Puneet Gambhir, quite expensive. 10 of the over already in 5 deliveries. That's a wonderful shot, but will that be caught? A couple of runs there, taken easily again. And that's the end of the 11th over. An expensive over by Puneet Gambhir, 12 of that over. And the score is 73 for 5 after 11 overs. Sagar coming to bowl his next over. That's a wonderful start. Oh, and he did not touch that, it seems. Would have been a really close call for a run out again. Just we'll have a look at that. Oh yes, he did not touch that at all. That was straight down the ground. It's a good shot. Just a single this time. Good stop by the fielder as well. What a shot that is. Should be a big one. Will be a big one. Absolutely brilliant shot. Pitched up and hit effortlessly there by Vishal Pandey. He's on fire, this guy. And a huge 6 down. The long off region. No chance for the fielder there. Just a spectator. This is really good batting by Vishal. Another good shot. Straight to the fielder, and he misses that. A quick single taken. Probably they'll come back for the second as well. No, they decide against it. Just a single.
Oh, and he's appealing for an LBW, and that was probably bat. That would have been the reason for not giving him out. Oh, and that was really close. Probably the impact outside the off stump, if not bat. That was a really close call. He will have to be careful there, the batsman. Coming to bowler's next delivery. Oh, and almost giving it back to the bowler. That's the end of a wonderful over. Just have a look at that. LBW. Oh, and that was really close. He's very lucky to be there. That was seriously close. Probably the impact could have been outside the off stump. That would have been one of those reasons. But a really good delivery and a very good over by Sagar, even when he got hit for a 6 in that over. The score after 12 overs is 81 for 5. Anonymous trying to build a partnership. Really nice partnership, this one. They were 44 for 5 at a point of time. Both these players have added a lot of runs. Puneet with his next over. Oh, and what a shot that is. Should be a big one. One bounce into the fence. A wonderful shot by Vishal Pandey again. He's on fire, this guy. 85 for 5. Just have a look at that. No chance for any fielder. Sighting the gap brilliantly and hitting it wonderfully well. And the width being offered by Puneet again, allowing the batsman to free his arms. Not at all good bowling. He's been expensive in his first over and he starts off the second over quite poorly. Coming to bowl his next delivery. Again a wonderful shot. Should be another boundary and he's on fire, this guy. Another wonderful piece of batting there. Just one bounce into the fence. Twice he's done the same thing in the same region. Just have a look at that. This time slightly finer. The last shot was a bit squarer. In the air, just a single. The long one does well here. Puneet Gambhir needs to bowl within the stumps. If he'll keep on bowling the widest deliveries, he'll get punished all day long. You have to bowl within the stumps, especially when you're not having too much of pace. This is the ball that he should be bowling continuously and consistently. This was a good delivery, just a single. The more full you bowl, the less is the batsman's chance of smacking you out of the park if he's not a top order batsman. And this time in the air, will that be caught? Oh, and he's dropped the sitter. Oh, and this is absolutely shocking there. Just have a look at that. Oh, and you gotta be kidding me. He's dropped that. Probably one of the most simplest catches that you will ever have on a cricket field. And what has he done? He spilled it over. Poor stuff there. And that too of Vishal. Was it Rishia? That was Rishi Arora. Must be heaving a sigh of relief there. But that was really poor by the fielder. Just have a look at that once again. Wonderful piece of bowling there. Pitching it up again. And that is what we were talking about. And oh, you can't drop those catches. Especially of players from an Anonymous Knights batting lineup. They are going to make you pay for sure. 13th over running. This is a wonderful delivery once again. Trying to come back for the second, and that is what happens when you drop catches of players like Rishi and Vishal. They will leave no stone unturned to make runs for their team, and
The score is 94 for 5 after 13. Could have been a successful over for the Alpha Panthers, but unfortunately the catch got dropped. And the run rate is well above 7 runs and over. So what a comeback by the Anonymous Knights after they were down and out at 44 for 5 and the run rate was less than 6 runs and over. But a wonderful piece of batting by Vishal Pandey and a very good support by Rishi Arora. The perfect second fiddle role being played by him. Both these players have taken the score to 94 for 5, which is definitely a good platform for a score of at least 150, if not more. They would be eyeing 150 for sure. That's a good start by Karan. Karan Joshi bowling his first over. He's a wonderful all-rounder, this guy. Great batting by Vishal Pandey. We were talking about this batsman. He's such a wonderful all-rounder. A genuine stroke player and a wonderful bowler as well. And he's come at number 6, so you can have the idea about the depth that they have in their batting, the Anonymous Knights. Oh, and that's a wonderful shot in the air and he's gone! For a moment it looked as if he had picked the right gap, but straight into the hands of the short third fielder this time. Just have a look at that. Easy catch taken by the fielder. It was a wonderful piece of bowling there. And a good catch taken by the fielder. So that's a 6th wicket down on the score of 94. A very important wicket in the form of Vishal Pandey going back to the pavilion. Karan takes his first wicket in just his first over. And we'll be back after a quick commercial break. Stay tuned, viewers. The new batsman on strike, Faisal Patel. They've got a very deep batting lineup, these guys, but today they seem to be in trouble. And Faisal is one player who has the capability of turning this match on its head. Oh, and he almost got an edge there. Karan is bowling really well. The perfect line and a good length as well. Not pitching it too up for the batsman to hit the shots as per their will. Since he's tall, he gets that extra bounce. This time in the air, but that was pitched really up. Just a single this time. Jfsc Tsl, the captain, throwing it really well back to the wicket keeper. Such a wonderful fielder this guy is, the captain of the Alpha Panthers, Jfsc Tsl. Just a single given on that delivery, but that was a good shot in the air. It was pitched up and probably should have reached towards the ball slightly more to hit it in the right direction.
That is the one which may fetch them. Oh, that should just be a single again. And Judge Doshi is already in position to pick that, and what a wonderful throw once again. And that is what the presence of mind of fielders can help the bowlers improve their confidence and bowl with a lot of zeal to take the wickets. We thought for a moment that it was a good shot and it will fetch at least 2 runs, but Yash already had the presence of mind to come in the line of the ball and stop it nicely. Oh, and this is a good delivery again, taking a quick single. Faisal Patel has started off well, and that's the end of the 14th over. 97 for 6 after 14. Last 6 overs remaining, so Anonymous Knights would definitely be eyeing 150 if not more. We'll have to see whether they will be able to score those many runs, because Vishesh Thangoi is having a lot of overs left. And he's the perfect guy to have in the death overs. Sagar coming to bowl his next over. On strike is Faisal Patel. A good shot towards the deep cover, just a single. Rishi back on strike. In the air this time. That's a good shot. Should be a couple easily. Coming back for the second. What a throw that was by the fielder at deep square leg. And Rishi Arora also playing a good hand now. 14 of 17 deliveries, this guy. Oh, and that's a wonderful piece of bowling, and Rishi beaten all ends up there. What a shot that is. Should be a boundary there. What a shot. Probably the shot of the evening, this one. He's on fire, this guy. Just have a look at that. Perfect balance. It's such a wonderful bat swing there. A boundary. No chance for the fielder who was placed for that shot, but it raced away to the boundary. Brilliant stuff there by Rishi. Great boundary scored by this guy, and probably this was the shot of the evening. Coming to bowl his next delivery. This is 4th over and the last of his spell. In the air this time. Played deliberately towards behind the bowler. Just a single, and there's one more delivery left. He was trying to take a second run, but only one this time. Really good batting by these two. Rishi Arora, 17 of 19 now. Oh, and trying to hit the big shot. Faisal, should be a boundary there. Oh, and what a stop that is. Wow. Just a single given, so 3 runs saved there.
This is absolutely stunning piece of work there. Just have a look at that. That was a very, very powerful shot hit by the batsman. Just a single given by the long on fielder, and the score after 15 overs is 106 for 6. So we'll have to switch to the Hindi commentary now. Allow me to do that for the next 5 years and 5 overs. Beg your pardon. And till the end of this innings. Till then, we take a break and be back soon. Stay tuned, viewers. वापस लाइव जुड़ गए हैं आपके साथ हम फातिमा क्रिकेट ग्राउंड से, और विशेष सांगोई आ रहे हैं अपना दूसरा ओवर लेकर. बहुत ही बेहतरीन कप्तानी कहूँगा मैं इसे यश दोषी की. अपने सबसे खतरनाक बॉलर को उन्होंने बचा के रखा है डेथ ओवर्स के लिए, और 16वां, 18वां और 20वां ओवर करवाएंगे इनसे. 3 ओवर बचे हैं विशेष के. बहुत ही बेहतरीन ये कप्तानी. 106 पर 6 है स्कोर, और फैसल पटेल ऐसे बल्लेबाज हैं जो गेम का, खेल का रुख परिवर्तित कर सकते हैं, खेल की दिशा मोड़ सकते हैं. देखना है कि क्या कुछ विशेष कर पाते हैं. जी हां, आते ही बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, और क्या ये कैच होगा? जी नहीं, 2 रन लेंगे आराम से. बहुत बेहतरीन ये धावक हैं दोनों बल्लेबाज. अच्छी गेंदबाजी विशेष की, तारीफ करनी होगी. बहुत ही ज्यादा बढ़िया शॉट नहीं कह सकते इसे, हालांकि हवा में खेला हुआ शॉट था और गैप में था इसलिए बच गए, लेकिन ये पूरी तरह बल्ले पर नहीं आई थी. फैसल पटेल के 2 रन का इजाफा स्कोर में, और ये कैच हो सकते हैं यहां पर, और ये विकेट कीपर की तारीफ करनी होगी. और एक विशेष कार्य कर दिखाया है, इसी के लिए इन्हें रोका था इनके कप्तान ने, और बेहतरीन कप्तानी कहूंगा मैं इसे यश दोषी की. तारीफ करनी होगी. 7वां विकेट और विशेष का पहला विकेट आज का, और क्या जबरदस्त कैच लपका वहां पर विकेट कीपर ने. आपको फिर से दिखाएंगे एक बार रीप्ले. देखिए तेज गेंद, और विकेट कीपर की तारीफ करनी होगी यहां पर. वाह, क्या कैच लिया था, और बहुत ही तेजी से बारी किनारा लेकर गेंद विकेट्स के पीछे गई, और पहले प्रयास में तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन गेंद को जाने भी नहीं दिया विकेट कीपर ने. और ये 7वां विकेट पेवेलियन की तरफ जाता हुआ विशेष सांगोई का पहला विकेट. 108 पर 7, ये 16वां ओवर चल रहा है. बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर नहीं हो रही है. गेंदबाजी की तो क्या ही कहने, बहुत बेहतरीन टीम को इन्होंने बांध दिया है. और नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर आते हुए बेहतरीन गेंदबाजी, नए बल्लेबाज को भी एक भी रन नहीं, डॉट गेंद. अच्छी शुरुआत यहां पर सुनील दुलगज के सामने विशेष.
बेहतरीन गेंदबाजी, बढ़िया शॉट और एक ही रन। बहुत ही अच्छा क्षेत्र रक्षण भी, तारीफ करनी होगी। पूरी तरह क्रिकेट बहुत बेहतरीन रहा यहां पर। और ये भारी किनारा विकेट कीपर से भी चूक हो गई हल्की सी, हालांकि एक ही रन मिलेगा। करण जोशी आए अपना अगला ओवर लेकर। बेहतरीन गेंदबाजी और क्या है, स्टंपिंग है जी नहीं, क्रीज के अंदर ही थे। बेहतरीन शॉट और ये 4 रन एक टप्पा के बाद, सीमा रेखा के बाहर। जबरदस्त प्रहार, बाहर की गेंद थी, हाथ खोलने का मौका दिया, क्या प्रहार है वाह। और ये खराब गेंद, और इसको उचित जगह पर पहुंचाया सीमा रेखा के पार, एक ही टप्पे के बाद 4 रन के लिए। अच्छी बल्लेबाजी यहां पर सनी दुलगज की, पहली बाउंड्री उनकी अपनी इस पारी की। ऋषि अरोड़ा बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं दूसरे छोर पर, और अभी भी 22 गेंदें बची हैं, तो कोशिश तो करेंगे कि 22 गेंदों पर 35 रन तो कम से कम बनाए। 150 का आंकड़ा जरूर यहां पर पार करना चाहेंगे, आवश्यक भी है इनके लिए एक मानसिक। और ये बेहतरीन गेंदबाजी और ये आउट। जबरदस्त यहां पर विकेट कीपिंग आप देख सकते हैं। यहां पर मैं पूरा श्रेय विकेट कीपर को दूंगा, वाह क्या कीपिंग की है। और करण जोशी इनका दूसरा विकेट, और क्या जबरदस्त उनका यहां पर रिएक्शन था विकेट लेने के बाद, जैसे कि कोई बदला पूरा किया हो, उस चौके का बदला लिया इन्होंने। आप देख सकते हैं एक बार फिर से, क्या बेहतरीन गेंदबाजी, वाह तारीफ करनी होगी विकेट कीपर की यहां पर। जी हाँ, और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विकेट और गिरा। एक बढ़िया बल्लेबाज है सनी दुलगज, निचले क्रम में आते हैं लेकिन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं। करण का ये दूसरा विकेट और 8वां विकेट गिरता हुआ एनोनिमस नाइट्स का। और क्या ये पूरे 20 ओवर खेल पाएंगे? बहुत बेहतरीन गेंदबाजी चल रही है यहां पर अल्फा पैंथर्स की। अब देखना यह है कि क्या एनोनिमस बची हुई 21 गेंदें उनका भरपूर फायदा उठा पाते हैं। लेकिन यहां तो अभी लग रहा है कि पूरे 20 ओवर खेल लेंगे तो वही अपने आप में एक विजय हो जाएगी इस दल के लिए। लेकिन इस दल को आप हल्के में आंक नहीं सकते हैं। राहुल सिंह आए हैं नए बल्लेबाज,
खासी जिम्मेदारी इनके कंधों पर। अब देखते हैं किस तरह से ये निभाते हैं इसे। करण बेहतरीन गेंदबाजी, और ये एक और अच्छी गेंद। और इनकी खास बात यह है कि ये बहुत लंबा रनअप तो नहीं लेते हैं, लेकिन आप देखिए इनका जो लाइन और लेंथ है और गेंदबाजी डालने का जो एक्शन है, क्विक आर्म एक्शन जिसे कहते हैं क्रिकेट की भाषा में, वो है। और गेंदबाजी डालते हैं ऑफ स्टंप से थोड़ी सी ज़्यादा बाहर, आप कह सकते हैं 5वें या 6वें स्टंप पर डालते हैं, और तेज़ आती हैं इनकी गेंदें, इसलिए मुश्किल हो जाती है बल्लेबाज को। ये देखिए एक बार फिर से वैसी ही गेंद 5वें या 6वें स्टंप पर ही डालते रहते हैं, और जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं ये। तारीफ करनी होगी इनकी कंसिस्टेंसी की। और ताबड़तोड़ बल्लेबाज तो हैं ही, बेहतरीन ऑलराउंडर से सुसज्जित ये टीम अल्फा पैंथर्स। एक और बेहतरीन गेंदबाजी, और ये वाइड दे दी इस बार। थोड़ा सा मुझे लगा कि यहां पर शायद बच सकते थे, लेकिन अंपायर का सख्त निर्देश, यहां पर वाइड है। एक और अच्छी गेंद, और तेजी से रन लेने की कोशिश। यहां पर क्या आउट होंगे, और ये रन आउट। और इसी की हम बात कर रहे थे, क्या ये 20 ओवर भी खेल पाएंगे कि नहीं। नवा विकेट यहां पर गिरता हुआ, और क्या करना चाह रहे थे। मेरे हिसाब से तो आसानी से रन हो जाता। ये देखिए भागे ही नहीं ऋषि अरोड़ा। राहुल सिंह की इसमें मेरे हिसाब से तो कोई गलती नहीं है, और नवा विकेट गिरता हुआ खराब तालमेल के चलते बेहतरीन यहां पर क्षेत्ररक्षण पॉइंट के क्षेत्ररक्षक का। और 9 विकेट पर 116 रन ही बना पाए हैं अभी तक। 17वां ओवर चल रहा है, और ये खासी मुश्किल में अब ये दल। सिर्फ 1 विकेट बचा है, और करण का ये ओवर बहुत महंगा साबित हुआ एनोनिमस नाइट्स के लिए। 2 विकेट उनके गिर गए इस ओवर में, और तो 20 ओवर खेल लेंगे तो शायद वही अपने आप में एक विजय होगी। ऋषि को यहां पर जिम्मेदारी कंधों पर उठानी होगी। सेट बैट्समैन है, तब से टिके हुए हैं बल्लेबाज। एक 116 पर 9, 17 ओवर के बाद। विशेष सांगोई अपना अगला ओवर लेकर आते हुए, और ये यहां पर विकेट कीपर से चूक हो गई है। हमने बहुत ही कम देखा है आज। 4 रन मिल गए यहां पर, और बाय के मिलेंगे 4 रन। जी नहीं, शायद बल्ला लगा था। देखना पड़ेगा कि ये क्या निर्णय है। जी नहीं, बाय था, बल्ला नहीं लगा था। ऐसा लगा कि शायद अंदरूनी किनारा शायद लिया हो, लेकिन बल्ला नहीं लगा था। तारीफ करनी होगी यहां पर विशेष सांगोई की, बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। बढ़िया गेंदबाजी और बेहतरीन शॉट भी ऋषि का। सरफराज शाह है नए बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं। स्ट्राइक पर तो ऋषि अरोड़ा ही हैं। विशेष सांगोई का यह 3रा ओवर है, 1 विकेट ले चुके हैं वो। देखना है कि आगे क्या गोल खिलाते हैं। और ये बेहतरीन गेंदबाजी, और यहाँ पर रनआउट की कोशिश भी नहीं की। स्लोअर गेंद डाली यहाँ पर विशेष सांगोई ने। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, और मेरे हिसाब से ये जो रणनीति है ये भी बहुत अच्छी है कि नए बल्लेबाज को स्ट्राइक पर लाके और शायद विकेट उड़ाना चाहेंगे। ये 17वां ओवर ही है, 18वां माफ कीजिएगा, तो तारीफ करनी होगी यहां पर। और लगभग यहां पर सफल हो गए थे
आखिरी विकेट उड़ाने में बल्ले पर लगी गेंद और 1 रन लिया तेजी से और ऋषि वापस स्ट्राइक पर। बहुत ज़्यादा श्रेय मैं यहाँ पर यश दोषी को देना चाहूँगा, जो इस वक्त इस समय जो स्थिति है इस मैच की। कप्तान यश दोषी बेहतरीन कप्तान, और क्या गेंदबाजी की इनके गेंदबाजों ने आज। और आप देखिए कितना ज़बरदस्त क्रिकेटिंग ब्रेन जिसे कहते हैं, विशेष सांगोई जैसे गेंदबाज को वो चाहते तो ऊपर कराकर 3 ओवर भी करा सकते थे, लेकिन कभी कभी नए गेंदबाज अच्छे होने के बावजूद विकेट्स नहीं ले पाते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और उन्हें पता है कि एनोनिमस नाइट्स की बल्लेबाजी क्रम बहुत नीचे तक जाता है, इस बात को खास कर ध्यान में रखते हुए शायद अपना होमवर्क कर आए हैं। और ये देखिए इसी की मैं बात कर रहा था, और विशेष सांगोई ने दूसरा विकेट लेकर इस पारी को समाप्त कर दिया और पूरे 20 ओवर भी खेल नहीं पाया। और इसी की हम चर्चा कर रहे थे कि क्या ये 20 ओवर भी खेल पाएंगे कि नहीं। 123 पर पूरी टीम यहां पर समाप्त होती हुई, बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर अल्फा पैंथर्स के गेंदबाजों के द्वारा, और सिर्फ 18 ओवर में 123 रन पर पूरी टीम को समेट दिया है, एनोनिमस नाइट्स के पूरे दल को समेट दिया है। और 124 का लक्ष्य इन्हें मिला है, और तारीफ करनी होगी यहां पर सारे गेंदबाजों की, और कप्तान की तो मैं तारीफ कर ही रहा हूं तब से। यश दोषी की बेहतरीन कप्तानी, और क्या उन्होंने चयन किए हैं गेंदबाजों का, और खास करके गेंदबाजी क्रम का भी चयन बहुत ही बेहतरीन। 18 ओवर के बाद एनोनिमस नाइट्स की पूरी पारी समाप्त होती हुई 123 पर 124 का उन्हें लक्ष्य मिला है। और 10 मिनट के बाद वापस आपके साथ जुड़ेंगे दूसरी पारी में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।
We welcome you back to the second innings in a wonderful TSL, the Super League match between the Alpha Panthers and the Anonymous Knights. And what a bowling performance we have seen from Alpha Panthers bowling unit. They bundled Anonymous Knights in just 18 overs for a paltry score of 123. Definitely not as per their standards. The Anonymous Knights, the defending champions of the TSL. And the first delivery is about to get bowled. Here we go. The second inning is starting. That's a wonderful start by the bowler. Right on the money, Sunny Dulgach. And Ankit is the opening batsman. He plays it well. He's come along with Kashif. And they're a really strong team as well, Ankit and Kashif. Oh, and this time pulled brilliantly towards the deep and one bounce into the fence. What a shot that is. What a start by Ankit. A short delivery and dealt with severely by the batsman here. Absolutely stunning piece of work there by Ankit. And this was a pacey delivery that definitely bounced a lot, and a wonderful pull shot. He was ready for that. And Sunny Dulgach bowling a good delivery, but Ankit playing a brilliant shot. Starts off with the boundary, opens his account and the team's account as well. This is some really good cricket being witnessed by all of us. And what a delivery! And he's gone! Wow! He's cleaned him up. And the first wicket down. Ankit coming back to the pavilion. Stunning bit of work there by Sunny Dulgach. And this was a really sharp delivery, a pacey delivery, and that came back into the batsman. Cleaned him up. Wonderful piece of bowling there by Sunny Dulgach. This is really good bowling. What a start by Sunny to this defense of score of 123. The first wicket down on the score of just 4 for Alpha Panthers. And what a delivery that was. A brilliant one. And the new batsman on strike, and what a delivery. First up, appealing for an LBW, but probably going down the leg side. Just have a look at that. Oh, and that was definitely missing leg, but that is a wonderful piece of bowling. He's pitching it up, and he's a really quick bowler, Sunny Dulgach. Another good delivery, this time outside the off stump. This is the last delivery of the first over. That's a wonderful piece of bowling. A quick single taken by Saurabh. He's off the mark. And that's the end of the first over. The score is 5 for 1. What a wicket that was. We'll show you the replay once again. Just have a look at that. Oh, and wonderfully bowled by Sunny Dulgach. The fist pump shows the happiness and the expression. And Ankit trying to hit that in the air again, but he should have slightly played with a straight bat instead of, and probably his partner, you can see there, Kashif,
Swing the straight bat to him, and that was the first wicket which was down in the first over. 5 for 1 is the score. They've started off really well. And you've got Rahul Singh who's coming in to bowl the second over. This is his first. Rahul starting his over. Oh, and this time in the air. And that's a good stop by the fielder, but probably he'll not come back for the second. And that's a good call. Wonderfully recovered by the fielder there. They would have been out for sure. They would have gone for the second run. Kashif on strike. Oh, and that's a wonderful delivery. Rahul bowling really well there. Rahul to Kashif. Oh, and what a delivery that is. Kashif trying to give him the charge. He adjusted the length brilliantly there. Rahul Singh is on fire. Just have a look at that. A wonderful piece of bowling there. And they are pumped up after the first wicket. Oh, and what a delivery. Just have a look at that bounce that he's extracted. A strong guy, the left armour. Another good delivery. So 3 dots in a row. Kashif needs to be patient here. Rahul is bowling some really good deliveries, steaming in with a lot of pace, and he's got a wonderful run up. Just have a look at that quick run up and a really good action as well. Oh, and what a delivery that was. Almost cut him into half there. Bringing the ball back into the right-hander sharply. Just have a look at that. Wonderful piece of bowling. And this is a treat to watch. Two really strong teams locking horns, and what a match we are having at the Fatima Cricket Ground in the Super League, TSL as they call it. Coming into bowl his next delivery. Should be a wide. Is a wide. Missing the line this time. And they've got extra run. Kashif Sheikh is letting it go. Is trying to play it over and above the point. But finally lets it go. Coming into bowl the next delivery, Rahul Singh. Oh, and this time coming down the track once again, but no success for Kashif here. Wonderfully bowled by Rahul Singh that over. 2 overs have been bowled, 7 for 1. This is a good start by Anonymous Knights.
Both the bowlers bowling really well. They've already taken a wicket. Ankit back into the pavilion. And we'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. Partners, hydration partners, and we back with the third over. That's a wonderful stroke. An easy couple taken by Saurabh. Sunny Dulgar's coming into bowl his second over. That was pitched up and on his pads, and 2 runs taken easily. Saurabh facing Sunny. What a shot that is! A cracker of a shot, but that's just a single. There's a fielder out there at sweeper cover. But a wonderful shot this time by Saurabh. Slightly short. Just have a look at that. Brilliantly played. Look at the bat speed there. Just sliced it towards the sweeper. What a shot that was. These guys are so talented. They take the game to another level. All these players. And these two teams, probably the strongest in the tournament. One of the strongest for sure. The Alpha Panthers and Anonymous Knights are definitely the defending champions. So, a great contest. Oh, and what a delivery! And he's not playing forward. Could be in trouble there. Kashif is not comfortable at the crease at the moment. Just have a look at that. He was slightly late into the shot, and had this ball been into the stumps, could have been trouble for Kashif. Oh, and a peach of delivery. Wow. Sunny Dulgar just bowling a spell of a lifetime here. Absolutely stunning piece of bowling there. Just have a look at that. No chance for any batsman to play that. Oh, and that was a snorter. Brilliant work there by Sunny. Bowling a real Jaffa there. They've been in a lot of trouble, these two batsmen. This is just the third over. That's a good ball once again. A quick single taken. This is really good running by Kashif. He's off the mark finally on the 8th delivery of his innings. But he's a wonderful talent. We all know that. He stays for long. A lot of runs are in store for him for sure. But all the applause, all the praises here for Sunny, who's bowling his heart out in the center. He's got some really oh, and this should be a wide, or is that a dot delivery? We'll have to see that. That's a dot delivery, probably the first bouncer of the over. And that's the end of the third over. The score is 11 for 1 after 3. Wonderful start by Anonymous Knights, defending a score of 123.
Rahul Singh. Another good delivery he starts off with. Another good delivery. Kashif struggling here. Not able to connect even a single delivery. This is some really high quality bowling by the Anonymous Knights opening pair. What a start they've given to their team. This is the 4th over, 11 for 1. Absolutely wonderful piece of bowling by the left armour as well. He's not got a wicket, but doesn't matter. The kind of pressure that he is maintaining from the other end, they will definitely get a wicket sooner or later. Another good delivery, and that's well played by Kashif. Straight to the fielder at point. No run taken. There's a lot of noise in the centre as well. They're bucking up their bowler really well. And that's the way to defend a score which is not so big, and this team is already a champion team, so a lot could be expected from them. The kind of cricket that they play is really high quality, and this time the keeper misses that. Should be a quick single. They've taken the single. That's a good stop by the backward point fielder, but a single taken easily. In the air, what a shot that is, will be a boundary. Oh, there's a fielder there, he does so well. Wow, this is really good stuff, and a couple taken there. But that was in the air for a while. Oh, and that would have been the catch of the tournament for sure. If that would have been caught, not at all easy. They take 2 runs comfortably. Let's have a look at that. Wonderful try. Rahul with his next delivery. Oh, and what a shot that is. Will that be a big one? And that's a huge 6. Wow. And spoils the over with a wonderful shot. Playing it on the up. Sunny Dulgach coming into bowl his next over. Kashif does well. Gives the strike back to Saurabh. This is his 3rd over, Sunny. Coming into bowl his next delivery. That's a wonderful shot. Will be a boundary. A poor delivery. Oh, and it stopped before the square leg boundary. A couple taken again by Saurabh. He's on fire, this guy. He's taken the attack to the opposition.
Another good delivery and trying to take the quick single, but sent back. And that's a sloppy bit of work there by the fielder. A single taken. Sunny would be disappointed. He's bowling really well with a lot of steam and pace. These sloppy efforts could demoralize the bowler, but a single taken and Kashif back on strike. This is really good strategy by both these batsmen. They're taking the quick singles as well, apart from the kind of shots that Saurabh has been hitting. Another good and a quick single taken. This time chance of a run out, and he was gone if he had hit. This is a poor call for sure, not at all required. And Kashif, probably in the heat of the moment, had got his partner out. Would have been the biggest blunder in this innings. But he's really lucky that he's still there. Saurabh, that was not a good call at all. He's on strike now, Saurabh. Another good delivery and straight to the fielder. This time they'll not take the single. That's a good piece of work there by the cover point fielder. Just one delivery remaining in this over. 5 already scored off this over, so they're batting well. Oh, and what a shot that is! Will that be a big one? It is a big one. Wow, that's a huge 6 straight down the ground. And Saurabh is on fire. That was pitched up, asking to be hit, and he was ready for that. Just have a look at that. Brilliant bat swing. And a 6 to end the over. So 2 huge 6s by Saurabh till now, and the score is 31 for 1 after 5 overs. What a start by Alpha Panthers after they lost the opening wicket really cheaply. And allow me to switch to the Hindi commentary now. This has been a wonderful start by Saurabh, who's playing on 22 of just 13 deliveries. And we take a quick break and be back soon with the Hindi commentary. Stay tuned. छठे ओवर की शुरुआत काशिफ स्ट्राइक पर, गेंदबाजी करने आया अमित. हवा में ये गेंद खेली हुई है, बेहतरीन शॉट है, गैप में खेला हुआ शॉट और बहुत ही बेहतरीन वहां पर क्षेत्र रक्षण. और ये देखिए क्या बेहतरीन थ्रो भी, लेकिन 2 रन यहां पर मिल जाएंगे. काशिफ ने आसानी से ले लिए. और ये हवा में खेला हुआ एक और शॉट. क्या यहां पर ये गैप में है? जी हां, 2 रन के लिए. फिर से काशिफ ने खेल दिया उसे लॉन्ग ऑफ की दिशा में. बढ़िया बल्लेबाजी काशिफ की, आक्रमण कर रहे हैं और ये अच्छी गेंद थी, लेकिन उसे बेहतरीन तरीके से खेला, सीधे बल्ले से खेला. सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी इस गेंद में. और ये हवा में खेला हुआ शॉट और ये कैच. वाह, विकेट दे दिया है यहां पर काशिफ ने अपना. क्या कैच लिया है फैसल पटेल ने, तारीफ करनी होगी. पॉइंट पर इसलिए तैनात थे. हवा में खेला हुआ शॉट अच्छा शॉट नहीं था और ये गेंद बहुत बेहतरीन थी. यहां पर लालच दिया कट खेलने का, और आपको ये शॉट खेलना अगर है तो आप नीचे खेलिए, लेकिन आप ऊपर खेलेंगे तो आप पेविलियन में जाएंगे. और आप देख सकते हैं, ये देखिए क्या बेहतरीन कैच लिया यहां पर फैसल पटेल ने. पॉइंट पर इसी के लिए तैनात किए गए थे. और काशिफ की
पारी यहाँ समाप्त होती हुई 7 रन बनाए उन्होंने 17 गेंदों पर। खासे दबाव में खेल रहे थे। और ये ओवर की 3 गेंदें बची हुई हैं। 35 पर 2 हो गया। अमित का पहला विकेट और अल्फा पैंथर्स का दूसरा विकेट यहाँ पर गिरता हुआ। 35 पर 2, 5.3 ओवरों में। एक छोटा सा विराम लेंगे, वापस जुड़ेंगे आपके साथ इस ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। निशान फूरिया आए हैं, नए बल्लेबाज। और ये मैच बहुत ही ज़्यादा रोचक हो गया है। छठा ओवर यहाँ पर डाला जा रहा है और कहीं से भी ये मैच एक तरफा नहीं लग रहा है। क्या ज़बरदस्त यहाँ पर अपने स्कोर का बचाव कर रहे हैं एनोनिमस नाइट्स का दल। और इनके खिलाड़ी ज़बरदस्त जोश में क्षेत्ररक्षण कर रहे हैं। गेंदबाजी तो उच्च स्तरीय है ही एनोनिमस नाइट्स की, हमने पहले ही कुछ ओवरों में देख लिया है। बहुत ही बेहतरीन मैच होता हुआ। सौरभ यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे अल्फा पैंथर्स के लिए। और निशान फूरिया भी बेहतरीन बल्लेबाज हैं। अब देखना है कि क्या बाएं हत्था गेंदबाज को अच्छे से खेल पाते हैं। और ये पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड, यही देखना था और तारीफ करनी होगी अमित की। क्या विकेट लिया है, वाह, जबरदस्त गेंदबाजी। 2 गेंदों पर 2 विकेट। जी हाँ, ये देखिए, इससे बढ़िया शुरुआत नहीं हो सकती है किसी भी नए बल्लेबाज के विरुद्ध। पहली गेंद पर पेवेलियन भेजा वापस निशान फूरिया को। और यही हम चर्चा भी कर रहे थे कि क्या ये बेहतरीन बल्लेबाज होने के बावजूद बाएं हत्था गेंदबाज को खेल पाते हैं। और पहली गेंद पर इनका विकेट उड़ाया। तीसरा विकेट यहां पर गिरता हुआ अल्फा पैंथर्स का। और ये मैच और भी रोचक होता हुआ। 5.4 ओवरों में 35 पर 3 अल्फा पैंथर्स। मानना पड़ेगा यहां पर क्या बेहतरीन यहां पर बचाव हो रहा है, डिफेंस हो रही है जबरदस्त। 123 के स्कोर की एनोनिमस नाइट्स की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। नए बल्लेबाज केयूर बल्लेबाजी करने आए हैं। और अमित की हैट्रिक है। और ये देखिए क्या जबरदस्त कप्तानी है। अपने गेंदबाज को पूरा मौका दे रहे हैं हैट्रिक बनाने का। संजीव सुलारिया बेहतरीन कप्तान है। और ये बच गए, लेकिन अच्छा खेला, बढ़िया गेंद थी और हैट्रिक चांस थी यहां पर। लेकिन केयूर ने ये गेंद आसानी से खेल ली। और ये बच गए। ऊपर की गेंद, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास। सीधे बल्ले से खेलना चाहिए इन्हें। लॉन्ग ऑन की तरफ मारने की कोशिश कर रहे थे। आप देखिए, शायद डीप मिड विकेट। जी हां, बल्ला तो डीप मिड विकेट की तरफ जा रहा था, पूरी तरह से चूके। और क्या बेहतरीन ओवर डाला है अमित ने। 2 विकेट पहले ओवर में अपने। स्कोर है 6 ओवर के बाद 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सिर्फ 4 रन गए इस ओवर में। बहुत ही बढ़िया शुरुआत अमित भोसेकर की। जबरदस्त गेंदबाज और अल्फा पैंथर्स को मुश्किल में डाल दिया है इतनी कलात्मक गेंदबाजी के चलते।
राहुल भद्रेश आ रहे हैं, नए गेंदबाज, बेहतरीन गेंदबाज हैं। इनका परिचय देने की हमें आवश्यकता नहीं है, सर्किट के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक हैं। और ये बढ़िया शुरुआत, 1 रन तेजी से ले लिया यहां पर। बेहतरीन गेंदबाजी, फ्लाइट दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं, वहां पर आमंत्रित कर रहे हैं बड़े शॉट को खेलने के लिए। और एक और बढ़िया गेंद यहां पर, बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहां पर, एक के बाद एक डॉट गेंदें खिला रहे हैं। एक रन लिया आसानी से। और ये बच गए, बेहतरीन गेंदबाजी, क्लीन बोल्ड होते थे, बच गए यहां पर। ओवर की समाप्ति, क्या ओवर डाला है, 7 ओवर में 37 रन, 3 विकेट के नुकसान पर, उससे 2 रन इस ओवर में। अल्फा पैंथर्स अब दबाव में आ गए हैं 3 विकेट गिरने के बाद। अमित का दूसरा ओवर, बढ़िया शुरुआत यहां पर, 1 रन लिया तेजी से। एक और अच्छी गेंद, लेकिन फिर से 1 रन लिया। लेग स्टंप की तरफ जा रही हैं इनकी गेंदें, लेग बाय का इशारा अंपायर के द्वारा, दोनों रन लेग बाय के ही हुए हैं। एक और बेहतरीन गेंद, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, चूके यहां पर बल्लेबाज केयूर ने सिर्फ अभी तक 1 रन बनाया है, 8 गेंदें खेल चुके हैं वो। सौरभ 23 रन सिर्फ 16 गेंदों पर। सौरभ की भूमिका यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है, पहले भी इस बारे में चर्चा कर चुके हैं। और इस बार हवा में खेला हुआ, और ये रन आउट, और ये चौथा विकेट भी गिर गया है। एक बार बाहर निकले तो वापस ही नहीं आ पाए। देखिए बहुत बेहतरीन यहां पर क्षेत्र रक्षण,
4 विकेट यहां पर गिर गए हैं अल्फा पैंथर्स के, और खासी मुश्किल में ये टीम। रन आउट हो गया है, गए हैं केयूर, और 1 रन के निजी स्कोर पर वापस जाएंगे पेविलियन की तरफ। अचानक से ये मैच एकदम पलट सा गया है। एनोनिमस नाइट्स ऐसे ही विजेता नहीं थे पिछले सीजन के, दर्शकों को बताना चाहूंगा मैं। 123 का स्कोर भी ऐसे डिफेंड कर रहे हैं, उसका बचाव ऐसे कर रहे हैं जैसे सिर्फ 50 रन का स्कोर बनाया है। और यही खासियत होती है एक चैंपियन टीम की, एक दल, इसके सारे खिलाड़ी आपस में एकजुट होकर खेलते हैं। हर एक खिलाड़ी की अपनी एक भूमिका होती है, और सारे खिलाड़ी इस समय अपनी भूमिका बड़ी बेहतरीन अंदाज से निभा रहे हैं। 4 विकेट गिर चुके हैं अल्फा पैंथर्स के। बड़ा ही मुश्किल भरा ये दौर है इनके लिए, और एक साझेदारी की जरूरत है यहां पर। 4 से 5 ओवर की साझेदारी की आवश्यकता। दबाव में है अल्फा पैंथर्स। संजय जोशी आए नए बल्लेबाज, बाएं हाथ का गेंदबाज हैं और बल्लेबाजी दाएं हाथ से करते हैं। देखना है कि किस तरह से वो अपनी पारी की शुरुआत करते हैं। यहां पर अमित भोसेकर को खेलना बहुत मुश्किल हो गया है। जबरदस्त गेंदबाजी डाल रहे हैं अमित। बेहतरीन क्षेत्र रक्षण यहां पर। बेहतरीन गेंदबाजी, और ये ओवर की समाप्ति। इनका दूसरा ओवर भी समाप्त हुआ, और एक और बेहतरीन ओवर, एक रन आउट यहां पर मिला इन्हें। 8 ओवर के बाद स्कोर 39 रन पर 4 विकेट, 7 रन प्रति ओवर का रिक्वायर्ड रन रेट हो गया है। सरफराज शाह है नए गेंदबाज। सौरभ है स्ट्राइक पर, इन्हें खड़ा रहना पड़ेगा देर तक अपने दल के लिए, और रन भी बनाने पड़ेंगे। रन तो बनाए उन्होंने, और ये बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन यहां पर चूक गए। हालांकि गेंद ऐसी थी जिस पर कवर्स पे बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर सकते थे, की भी उन्होंने, हालांकि बल्ले पर नहीं आई। बेहतरीन शॉट, हालांकि वहां पर एक क्षेत्र रक्षक पहले से ही, 1 ही रन मिलेगा, लेकिन बढ़िया शॉट था। छोटी गेंद सरफराज के द्वारा ऑफ स्टंप के बाहर, 1 रन के लिए उसे खेला। हालांकि प्रहार बहुत करारा था। संजय की बेहतरीन शुरुआत, यहां पर 1 रन लिया आसानी से लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलकर। और ये बढ़िया शॉट, 4 रन मिलेगा यहां पर। बेहतरीन प्रहार, जबरदस्त प्रहार 4 रन के लिए, कोई मौका ही नहीं वहां पर स्वीपर कवर के क्षेत्र रक्षक के लिए। ये देखिए खराब गेंद ऑफ स्टंप के बहुत बाहर, और पूरा मौका दिया हाथ खोलने का। और सौरभ एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो थोड़ी देर और खड़े हो जाते हैं अगर, तो अल्फा पैंथर्स के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। इस बार बेहतरीन वापसी सरफराज की, चौका खाने के बाद बढ़िया गेंद डाली विकेटों के बीच में।
बड़ी आसानी से 1 रन ले लिया मिड विकेट की तरफ खेलकर, और ओवर की समाप्ति यहाँ पर 9 ओवरों के बाद स्कोर है 46 पर 4। अल्फा पैंथर्स खासे दबाव में, हालांकि बल्लेबाजी क्रम में ये भी बहुत निचले क्रम तक खेलते हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं इनके पास। ऋषि अरोड़ा आए हैं पहला ओवर लेके, बढ़िया शॉट यहाँ पर, उतना ही अच्छा क्षेत्र रक्षण फैसल पटेल के द्वारा, एक भी रन नहीं दिया। ये 10वां ओवर है। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी और ये डॉट गेंद। बढ़िया शॉट, 1 ही रन मिलेगा लॉन्ग ऑन पर, बढ़िया क्षेत्र रक्षण। और ये 10वां ओवर है इस दूसरी पारी का। 63 गेंदों पर 77 रन चाहिए। मैच अभी भी अल्फा पैंथर्स की पकड़ से दूर नहीं है, लेकिन दबाव तो जरूर होगा। 4 विकेट गिर गए हैं। देखना है कि एनॉनिमस नाइट्स इस मैच को बचा पाते हैं। बेहतरीन शुरुआत की उन्होंने अल्फा के विरुद्ध, और ये बढ़िया शॉट, तेजी से 1 रन लिया इस बार। और ये खराब थ्रो, लेकिन बहुत बढ़िया बैकअप किया वहां पर कप्तान संजीव ने। और यहाँ पर संजीव की तारीफ करनी होगी, जिस तरह से आक्रामक रुख अपनाया उन्होंने। 4 विकेट उनके गेंदबाजों ने और क्षेत्र रक्षकों ने चटका दिए पहले 10 ओवरों में ही। कुछ इस तरह की शुरुआत एनॉनिमस नाइट्स की भी हुई थी। उनके तो 5 चले गए थे 44 के स्कोर पर। और ये लेग स्टंप के बाहर की गेंद, पता नहीं क्यों अपील कर रहे हैं ये, शायद 1 रन ना लें ये चाह रहे थे, और सफल भी हुए। एलबीडब्ल्यू का तो कोई यहाँ पर मौका ही नहीं था। और ये 10वें ओवर की आखिरी गेंद, 48 है स्कोर। सौरभ का खड़ा रहना बहुत जरूरी है, जब तक वो क्रीज पर रहेंगे, विकेट पर रहेंगे। बढ़िया शॉट इस बार, क्या ये बड़ा शॉट है? जी हाँ, बेहतरीन शॉट, 6 रन। और इसी तरह की पारी की हम उम्मीद करते हैं सौरभ से। और 10 ओवरों के बाद स्कोर 54 पर 4। देखिए सीधे खेल दिया, खराब गेंदबाजी ऋषि की। फुल टॉस गेंद नहीं दे सकते आप सौरभ को, खास करके जब वो इस फॉर्म में है। और 54 पर 4 10 ओवर के बाद। और अब ड्रिंक्स ब्रेक के निर्देश अंपायरों के, और थोड़ी देर में आपके साथ वापस जुड़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ, बहुत ही रोमांचक मैच हो रहा है यहाँ पर। 10 ओवरों में 54 रन पर 4 विकेट खो चुकी है अल्फा पैंथर्स की टीम, और 124 रन बनाने हैं आखिरी 10 ओवरों में। 70 रन होने चाहिए जीतने के लिए। एक विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।
We are back live after the drinks break and we've switched to the English commentary. Rahul Bhadresh. He's coming for the quick single for no reason. Oh, and this time he's missed it and they come back for the single. It's a sloppy bit of work. And he was probably trying to give strike to Saurabh, which was the right thing to do, but that was not a run. They're lucky that the fielders fumbled there. And the same happened with the previous batsman as well. He was trying to take the quick single and got himself run out for no reason. That was a soft dismissal. Oh, and this time he's appealing for an LBW and probably drifting down the leg side. That was really close. Rahul Bhadrashwara is a wonderful bowler. We know his potential. Another good delivery. The arm ball this time. Played well by Saurabh. He needs to stay there, Saurabh. 36 of 27. He is the key. If he stays for another 5 overs, this match can definitely be inclined towards the Alpha Panthers once again. Currently it's 50-50. That's a good shot. What a shot that is. Found the right gap. Should be a couple. Just a single. There's a fielder out there at deep cover. This time appealing on an LBW, but going down the leg side and quite high as well. So that's a very good over by Rahul. And the score is 11 overs and 56 for 4. Vishal Pandey coming to bowl his first over. This is really good captaincy by Sanjeev. He's got so many options. He's using them really well. Vishal Pandey is a wonderful bowler. We know his capabilities and he can cause havoc in the middle overs. Has a knack of picking up important wickets, this guy, and Saurabh would definitely be on his agenda for sure. That's a good start by Vishal. Probably a short delivery, but was not able to pull that. On strike is Saurabh, who's currently the backbone of the team. That's a wonderful shot. Should be at least a single. That's a good stop by the fielder. They've placed the fielders exactly where he hits those shots. This is really good captaincy by the captain of Anonymous Knights, Sanjeev Tsl. But he's got the ability to hit big shots as well. He's already hit a few sixes, brilliant ones, Saurabh. Oh, and that's a wonderful shot. Should be a boundary, and that's a boundary. That was a good effort by the fielder, but that was hit straight as an arrow. Just have a look at that. Vishal pitching it up and Sanjay Joshi hitting a very important boundary for his team. Probably this could have been stopped. But that was a wonderful shot, and Vishal Pandey bowling another short delivery this time. Played well by Sanjay.
That's a wonderful piece of work there by the captain, Sanjeev Sularia. He is a live wire on the field. Batting or fielding, just have a look at that effort. Absolutely stunning piece of work there. Although could not stop the single, but the commitment more than 100% there by the captain. Should be a wide, will be a wide. Vishal slightly expensive in his first over. Oh, and this time almost getting the edge there. Good delivery. Sort of trying to cut that. He should have gone for the pull. I think so. That was a delivery that was rising. He opted to cut a delivery. That's a good shot again towards the extra cover. Should be a couple. They're content with the single. It's a good stop by the fielder as well at long off. Comes running towards the extra cover, and 12 overs have been bowled now. 64 for 4. And this match is wide open. Just 60 required now in the last 8 overs. 7.5 is the ask. And Saurabh is the key. 38 of 32. You can see the dip in the strike rate. 39 of 33 now after that single on the last delivery. But the strike rate is not important here. He can always up the ante in the latter part of the innings too, but he needs to stay there, take the game as close to the end as possible. He has the ability to hit 15 to 20 runs in an over. He's got those shots. He's already hit a lot of runs all around the park. 3 huge sixes he's already hit, and he's one guy whom Panthers team would be expecting to stay till the end. Rahul Bhadrashwara with his next over. That's a good shot. Should just be a single. There's a long on in place. That was pitched up, and Saurabh trying to hit the big shot once again. Oh, and this time played well towards, and that's a huge 6. Wow, played well towards the deep mid wicket. What a shot that was. Just have a look at the replay. Brilliant shot. Huge 6. Swept it really well. Sanjay Joshi, he's playing such a crucial role here, and he's taken the pressure off Saurabh with that shot. A very important 6 in the context of this game. That was such a wonderful piece of batting by Sanjay. That's a good shot again. Should be a dot delivery straight to the fielder there. And now they'll take the quick. Oh, and the batsman not ready for the single there. So the good backing up by the fielder as well. So they've already scored 7 of this over. They shouldn't be panicking here for the cheeky singles. Need to maintain the run rate. That is what is required and stay till the end. Both these players, both of them really good players of spin bowling that we've already seen. And hitting a 6 to Rahul Bhadrashwara by no means is a small feat. This shows the class of the batsman, and Sanjay Joshi right up there with his shots. Such a wonderful shot executed towards the deep mid wicket for a 6. This time played again towards the deep square leg. Should be a couple, and they're content with a single. Just a single there. So, the 13th over. Being bowled by Rahul Bhadrashwara. 8 runs have been scored of this over. 1 delivery still to go. Saurabh on strike, and he plays it well towards the square leg for a single. This is a really good over. 9 of that over, and the score is 73 for 4 after 13 overs. That was a really good score, good over for the Alpha Panthers, and they've come back nicely after the 4 wickets that were down with less than 50 on board. 73 for 4 after 13. Stay tuned, we'll be back after a quick break.
Vishal Pandey coming into bowl his second over. Starts off well and takes a single towards the sweeper. Saurabh. Sanjay back on strike. That's a good delivery, just a dot. Played it towards the extra cover, but the fielder is there. The captain himself stopping that. Another good delivery, but played really well towards the sweeper once again for a single. Saurabh back on strike, and whenever Saurabh comes to strike, you can expect something from his bat. Any big shot on the delivery, he's capable of finding the right gaps, and he can always clear the ground as well. Such is his prowess. And this time in the air, just a single. Should have been a bit careful there. Could have gone straight into the hands of the covers fielder, the captain, waiting for the catch. Oh, and what a shot again, straight down the ground. And that's just a single. That's a wonderful piece of work there by the long on fielder. That was a good shot again. Sanjay seems to be really strong when he plays with a straight bat. Straight to the point fielder, no run taken. That's the end of Vishal's second over. Gives away only 4 runs in that over, and the score is 14 overs, 77 for 4. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned. That's a new over started by Amit Bhosekar. This is his second spell. He's bowled really well in the first spell of his. 2 wickets he's already taken. Just a single this time towards the long off. That's a good shot played towards the deep mid wicket. Should just be a single, so they're taking it really well, this chase. Just taking the singles, rotating the strike at regular intervals. Another good shot this time. Plays well towards the long off. Just a single.
trying to hit the big shot. The long on doing really well, just a single given. This is really good stuff by the long on fielder. And Sanjay needs to run the first one really quickly. Saurabh always ready for the second, but Sanjay, many a times we've seen he's not supporting on the second run. If they can hit boundaries, then it would not be required, but some of the other time it may be required to take the second run as well, convert the ones into twos. That's a good shot. He comes down the track, plays well towards the deep mid wicket, just a single again. Just one delivery remaining in the 15th over, and he'll be switching to the Hindi commentary after this over, and we'll take you through till the end with our Hindi commentary. Amit Bhosekar bowling really well. Should be a wide, oh, probably the commentator's curse. The first bad delivery that we have seen from him. This guy has been brilliant with the ball. The left arm spinner from Anonymous Knights, Amit Bhosekar. Pulls up nagging line, impeccable length, and some good flight as well, and this time played it in the air straight to the deep mid wicket fielder, just a single again. So 7 of that over, a good over again in context of this match for Alpha Panthers. 15 overs have been bowled, 84 for 4, and they need just 40 to win in the last 5 overs. And we'll be switching to the Hindi commentary now for the rest of the innings. Stay tuned, we'll be back after a short commercial break. स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से। आखिरी 5 ओवर बचे हैं। विशाल पांडे आए हैं अपना तीसरा ओवर लेकर। बेहतरीन मैच हो रहा है फातिमा क्रिकेट ग्राउंड पर। द सुपर लीग में TSL के नाम से प्रसिद्ध है ये टूर्नामेंट, और इस प्रतियोगिता में आपको एक से एक बेहतरीन खिलाड़ी मिलेंगे। और ये बढ़िया शॉट, और क्या ये 4 होगा? जी हाँ, चौका हो गया है। बहुत खराब गेंद थी ये, छोटी गेंद तो थी, और आप देख सकते हैं ऑफ स्टंप के कितना बाहर थी। अगर ये नहीं मारते तो वाइड भी मिलती इन्हें, लेकिन इन्होंने चौके से अपना अर्धशतक पूरा किया है। सौरभ ने तारीफ करनी होगी इस बल्लेबाज की। पहले भी हमने इस बात
कि चर्चा की थी कि सौरभ का खड़े रहना बहुत जरूरी है विकेट पर। जी हाँ, और क्या अर्धशतक है, वाह, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज। और इस बार ये वाइड होगी। जी हाँ, पिछली ही गेंद की तरह इस बार भी ऑफ स्टंप के बहुत बाहर विशाल पांडे ने आज निराश किया है। पहले ओवर में भी अच्छे खासे रन पड़े थे उन्हें, और ये मौका ऐसा है कि इन्हें जो इनका असली स्तर है उस तरह की गेंदबाजी करनी चाहिए। बहुत बेहतरीन गेंदबाज हैं, 2 विकेट लेकर अपने कप्तान को अगर दे देते हैं ये बचे हुए स्पेल में, तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हो पाएगी। हालांकि आसान नहीं होता है किसी के लिए भी, खास करके जब सामने सौरभ जैसा बेहतरीन बल्लेबाज हो। दबाव गेंदबाज पे भी होता है। क्या बेहतरीन शॉट है, और ये छोड़ दिया है कैच। और क्या इन्होंने मैच छोड़ दिया है यहां पर, सीधे हाथ में कैच था, करारा प्रहार, लेकिन हवा में और हाथ में, और क्षेत्ररक्षक को वहीं पर तैनात किया गया था। स्वीपर कवर की सीमा रेखा के पास कैच छूटता हुआ 1 रन भी मिल गया। बहुत ही ज्यादा ये घातक साबित हो सकता है। और इस बार हवा में गेंद, 4 रन मिलेगा। जी नहीं, एक क्षेत्ररक्षक को तैनात किया है। थर्ड मैन पर भी बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है यहां पर दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से, लेकिन पिछली गेंद पर कैच होना चाहिए था। टीएसएल के स्तर पर ये कैचेस लेना बहुत महत्वपूर्ण। टीएसएल बहुत ही जबरदस्त प्रतियोगिता है। विशाल की बेहतरीन गेंदबाजी, और ये ओवर की समाप्ति, उनका तीसरा ओवर समाप्त हो और अच्छी वापसी की। दूसरी गेंद पर चौका खाने के बाद सिर्फ 7 रन दिए हैं पूरे ओवर में, और 91 पर 4 हो गया है स्कोर 16 ओवरों के बाद। और आखिरी 4 ओवरों में अभी चाहिए 33 रन, डेथ ओवर जिन्हें कहते हैं, उसमें 33 रन की आवश्यकता। और एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस जुड़ेंगे, आपके साथ बने रहिए हमारे साथ। राहुल भद्रेश्वर आए हैं, बेहतरीन शॉट, क्या ये चौका होगा? जी हाँ, 4 रन। क्या शॉट लगाया है यहां पर संजय जोशी ने, तारीफ करनी होगी इस बल्लेबाज की। बहुत ही संयम भरी पारी खेली है अभी तक इन्होंने, और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चौका। पहली गेंद पर अगर आप चौका ले लेते हैं तो पूरे ओवर की कहानी बदल जाती है, और वो भी राहुल भद्रेश्वरा जैसे गेंदबाज की गेंद पर। खराब गेंदबाजी मैं कहूंगा इसे, छोटी गेंद लेग स्टंप की तरफ, और क्या शॉट खेला वहां पर संजय ने। 25 पर आ गए हैं सिर्फ 21 गेंदों के बाद, वाह। और ये वाइड होगी ऐसा लग रहा है। जी हाँ, वाइड, और ये तेज डालने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर, जरूरत नहीं है। राहुल जाने जाते हैं अपनी फ्लाइट के लिए, अपनी आर्म बॉल के लिए, और बहुत ज्यादा तेज गेंदें डाल रहे हैं। और एक गेंदी हुई 5 रन आ गए हैं। बहुत ही बेहतरीन शुरुआत इस ओवर की। जी हाँ, ये गेंद डालना है इन्हें। ये गेंद आप डालेंगे तो आपको बड़े शॉट्स मारना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा किसी भी बल्लेबाज के लिए। और पहली गेंद पर खराब गेंदबाजी के चलते चौका खा गए, और ये मैच बहुत ज़्यादा रोचक हो चुका है। हालांकि तारीफ करनी होगी इस साझेदारी की। जबरदस्त साझेदारी है, 58 रन की नाबाद साझेदारी अभी तक, और ये 1 रन होगा लॉन्ग ऑफ की दिशा में। हवा में खिला हुआ शॉट, एक समय ऐसा लग रहा था कि क्या ये कैच हो जाएंगे, लेकिन जी नहीं, 1 ही रन मिला। 59 रन की पार्टनरशिप साझेदारी हो चुकी है 57 गेंदों पर। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी इन दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। संजय जोशी की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। स्ट्राइक पर देखिए आसानी से 1 रन ले लेते हैं, ये खासियत इनकी। बहुत बढ़िया यहां पर बल्लेबाजी संजय के द्वारा। सौरभ तो है ही खैर,
जबरदस्त खिलाड़ी, लेकिन संजय की बल्लेबाजी की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। जी हाँ, और किसी भी वक्त, किसी भी समय, किसी भी तरह के दबाव में नहीं दिखे संजय। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही देख सकते हैं कितने ठहराव वाले क्रिकेटर हैं, कूल कस्टमर जिसे कहते हैं क्रिकेट की भाषा में। और ये आसानी से 1 रन ले लिया एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, कप्तान संजीव सुलारिया। और ये 100 रन बन चुके हैं 17वें ओवर में। क्या बेहतरीन यहाँ पर क्रिकेट देखने को मिली है इन दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से। हालांकि रन रेट अभी भी 6 रन नहीं है प्रति ओवर, लेकिन क्या ज़बरदस्त पारियां खेली इन दोनों ने। सिर्फ 24 रन की दरकार अब 19 गेंदों पर। बढ़िया यहाँ पर रनिंग बिटवीन द विकेट। आप देखिए कितना तेजी से रन लिया। जी नहीं, रन नहीं लिया इन्होंने, वापस भेजा वहां पर सौरभ को। लेकिन ये ओवर की समाप्ति, और बहुत ही महंगा ओवर ये। 9 रन इस ओवर में बने और 17 ओवर के बाद स्कोर है 100 पर 4। 24 रन चाहिए अब जीतने के लिए 3 ओवरों में। 8 रन प्रति ओवर की दरकार यहां पर, और 8 रन प्रति ओवर इस बल्लेबाजी क्रम के चलते कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। हालांकि क्रिकेट का खेल है, अनिश्चितताओं का खेल है, हमें पता है। कभी कभी 8 रन प्रति ओवर की भी आवश्यकता ज़्यादा साबित होती है। देखना है कि गेंदबाजी करने कौन आएगा। अमित भोसेकर आए हैं अपना आखिरी ओवर डालने। बेहतरीन गेंदबाजी की है इन्होंने, 2 विकेट ले लिए हैं 3 ओवरों में। सौरभ स्ट्राइक पर, और ये बड़ा शॉट, और ये आउट। बेहतरीन गेंदबाजी अमित के द्वारा, और सौरभ ने बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया, और यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट गिरता हुआ। आप देख सकते हैं क्या बढ़िया कैच लपका यहां पर लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र रक्षक ने। और ये 5वां विकेट गिरता हुआ अल्फा पैंथर्स का, और सौरभ नाखुश खुद से। मैच खत्म करना चाहते थे पूरा, लेकिन यहां पर पेविलियन वापस जाना पड़ेगा। और जबरदस्त पारी सौरभ की, बिल्कुल भी खुश नहीं है। समझ सकते हैं हम, इस तरह की बल्लेबाजी कर रहे थे, आज लग रहा था आउट ही नहीं होंगे, लेकिन आखिरकार अपना विकेट दे बैठे। और अमित का ये 3रा विकेट, और ये मैच एक बार फिर से पलटता हुआ। अब देखना है कि क्या वापसी कर पाते हैं एनोनिमस नाइट्स फिर से इस मैच में। ये देखिए बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, चूक गए, और बेहतरीन कैच। कप्तान यश दोषी आ रहे हैं, स्ट्राइक लेंगे, बिल्कुल सही समय पर आ रहे हैं। 17 गेंदों पर चाहिए 24 रन, और यश से बढ़िया बल्लेबाज इन स्थितियों में शायद ही कोई होगा इस पूरे सर्किट में। हालांकि ये कैसे खेलते हैं, अभी इनके बल्ले से ही रन निकलेंगे तब पता चलेगा। कभी कभी बड़े बड़े खिलाड़ी भी दबाव में चूक जाते हैं। सत्रह गेंदें बची हैं, 24 जीतने के लिए चाहिए। अमित भोसेकर बेहतरीन गेंदबाज, चौथा ओवर डाल रहे हैं अपना, और 3 विकेट ले चुके हैं। 17 पर 24 की दरकार। इतना यश किस तरह से शुरुआत करते हैं, शायद पहले सेट होना चाहेंगे, पहली गेंद से ही बड़ा शॉट खेलने का प्रयास नहीं करना चाहेंगे, समझना चाहेंगे गेंदबाजी कैसी है। और ये इस बार हवा में गेंद, और ये आउट। 2 गेंदों पर 2 विकेट। खराब बल्लेबाजी, बहुत ही खराब बल्लेबाजी है कप्तान के द्वारा। और क्या कैच लिया है लॉन्ग ऑन के फील्डर ने। देखिए क्षेत्र रक्षक तैनात थे और सीधे हाथ में गेंद।
बहुत ज्यादा ये बड़ा झटका लगा है यश दोषी पहली गेंद पर पेविलियन जाते हुए। जरूरत ही नहीं थी इस शॉट की, कोस रहे होंगे अपने आप को। छठा विकेट 100 रन के स्कोर पर गिरता हुआ, अभी भी 16 पर 24। क्या मैच हो रहा है, वाह। 6 विकेट गिर चुके हैं, करण आए हैं बल्लेबाजी करने और बहुत ज्यादा खराब शॉट कहूंगा मैं इसे, गैर जिम्मेदार शॉट कप्तान यश का। सीधे हाथ में गेंद थमा दी। पहली गेंद थी, आराम से 1 रन लेकर पहले देख सकते थे कि गेंदबाजी कैसी है, लेकिन उन्होंने बड़ा शॉट खेलना चुना यहां पर। और देखिए सीधे सतीश के हाथ में गेंद, क्या बढ़िया कैच लपका। और खुशी देखिए आप, ऐसा लग रहा है कि मैच जीत गए, क्योंकि उन्हें पता है कि यश जैसा बल्लेबाज जब आउट होगा तो बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट होगा, और वही हुआ। लेकिन ये खराब बल्लेबाजी कहूंगा मैं, जरूरत नहीं थी इस शॉट की, और अपनी टीम को धकेल दिया है फिर से खतरे में। यहां पर करण जोशी आए हैं, एक और बेहतरीन बल्लेबाज। अब देखना है कि अमित भोसेकर जो वापस अगली गेंद डालेंगे, हैट्रिक पर हैं, 2 गेंदों पर 2 विकेट ले चुके हैं। बेहतरीन गेंदबाजी, और ये कैच की अपील, लेकिन अंपायर ने यहां पर मना कर दिया है। और विकेट कीपर को देखिए, ऐसा लग रहा है कि बाहरी किनारा था, लेकिन यहां पर जरा सा भी सहयोग नहीं बल्लेबाज का भी, तो हो सकता है कि नहीं भी लगाओ, यहां से तो मुश्किल होता है बताना। अंपायर का निर्णय गेंदबाजी टीम के विरुद्ध, और अगर ये विकेट जाता तो हैट्रिक हो सकती थी, लेकिन यहां पर डॉट गेंद। अगली गेंद अमित की, करंट स्ट्राइक पर, और ये आसानी से 1 रन ले लिया लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलकर। बढ़िया गेंदबाजी अमित की। अमित की अगली गेंद, बढ़िया शॉट, और ये कैच छोड़ दिया यहां पर कप्तान ने। इतनी बड़ी गलती है, और क्या यहां पर उन्होंने मैच छोड़ दिया है। संजय जोशी, हवा में खेला हुआ शॉट और आसान सा कैच था, और ये क्या कर बैठे यहां पर संजीव सुलारिया। जी हां, दोनों कप्तान दबाव में हैं, साफ दर्शित हो रहा है यहां पर। अब देख सकते हैं कितना आसान सा कैच छोड़ा, हवा में खेला हुआ शॉट कवर्स की दिशा में, ये देखिए, और ये चूक गए यहां पर। बड़ी गलती हो सकती है। करण जोशी वापस स्ट्राइक पर, और ये एलबीडब्ल्यू आउट। गेंद नीचे रह गई थोड़ी, और बेहतरीन गेंदबाजी कहूंगा मैं इसे। 7वां विकेट गिरता हुआ आप देख सकते हैं। थोड़ा सा दुर्भाग्यशाली रहे यहां पर करण, सीधा खेलना चाहिए था इस गेंद को, लेकिन चूक गए। और 7वां विकेट गिरता हुआ अमित के 5 विकेट पूरे यहां पर, तारीफ करनी होगी। 4 ओवर में 5 विकेट, क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है, और क्या मैच हो रहा है यहां फातिमा क्रिकेट ग्राउंड पर इन दोनों दलों के बीच। 2 ओवर में चाहिए अब 22 रन इस मैच को जीतने के लिए अल्फा पैंथर्स को। सिर्फ 3 विकेट बचे हुए हैं, और क्या बेहतरीन वापसी की है एनोनिमस नाइट्स के खिलाड़ियों ने। और अमित ने 5 विकेट ले लिए हैं, उनका 4 ओवरों का स्पेल समाप्त होता हुआ। संजय जोशी अभी भी हैं क्रीज पर, कुछ भी हो सकता है इस मैच में। एक छोटा सा विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बन रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।
स्वागत करना चाहेंगे आपका एक बार फिर से। बेहतरीन मैच होता हुआ, कांटे की टक्कर यहां पर दो बेहतरीन दलों के बीच। एनोनिमस नाइट्स 7 विकेट ले चुके हैं और ये क्लीन बॉल सनी दुलगच ने आते ही यहां पर एक बड़ा विकेट ले लिया है और संजय जोशी आउट हुए हैं। और ये देखिए पहली गेंद पर 8वां विकेट उड़ा दिया। बेहतरीन गेंदबाजी और एक खराब शॉट था, सीधे बल्ले से नहीं खेला इन्होंने, इसलिए अपना विकेट गंवाया। और अल्फा पैंथर्स यहां पर अचानक से इस मैच से बाहर होते हुए दिख रहे हैं। एनोनिमस नाइट्स की तारीफ करनी होगी, सनी दुलगच क्या गेंदबाज हैं, तारीफ करनी होगी। दूसरा विकेट इनका और बिल्कुल सही गेंदबाजी है, संयम बरतते हुए ये गेंदबाजी डाली इन्होंने, सीधे विकेट टू विकेट गेंद। बहुत ही बेहतरीन और सकारात्मक गेंदबाजी। जी हां, और इस तरह की गेंदबाजी अगर आपके दल में हो तो 120 का स्कोर भी आप बड़ा बना सकते हैं किसी भी टीम के लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने देखा है कभी कभी अच्छी टीमें जो होती हैं जिनकी गेंदबाजी बहुत ज़बरदस्त होती है, उन्हें कभी इस बात का डर नहीं रहता है कि उनका स्कोर जो बना है वो छोटा है। उन्हें पता है कि उनके गेंदबाज ऐसे हैं। ऑस्ट्रेलिया की खास करके मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा और तारीफ भी करना चाहूँगा। T20 मैचेस में 120 का स्कोर बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन क्या गेंदबाजी की है इन्होंने। एनोनिमस नाइट्स की जितनी भी तारीफ की जाए, और कप्तान की भी यहाँ ज़बरदस्त तारीफ करनी होगी, संजीव सुलारिया। हालांकि कप्तानी अल्फा पैंथर्स के कप्तान ने भी बहुत बढ़िया की, 18 ओवर में ही यहाँ पर आज समेट दिया था पूरी टीम को। एनोनिमस नाइट्स जैसी बेहतरीन टीम को 18 ओवर में समेटना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन क्या ज़बरदस्त वापसी की एनोनिमस नाइट्स ने। 19वां ओवर चल रहा है, अभी भी 22 रन चाहिए 11 गेंदों पर। पुनीत आए हैं, बढ़िया शॉट, 1 रन लेंगे आसानी से। पहली गेंद पर खाता खोला संजीव की, बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर, बढ़िया क्षेत्र रक्षण, 1 ही रन दिया। 10 बॉल पे चाहिए अब 21 रन जीतने के लिए। पारसवीरा हैं स्ट्राइक पर। सनी दुलगच चौथा ओवर डाल रहे हैं अपना पारसवीरा को, और ये क्लीन बॉल, क्या बेहतरीन गेंदबाजी है। 9वां विकेट भी गिरता हुआ, क्या जबरदस्त गेंदबाजी। और अल्फा पैंथर्स ऐसा लग रहा है कि पूरा दल सिमट जाएगा बहुत ही जल्दी। क्या जबरदस्त गेंदबाजी, यॉर्कर, परफेक्ट यॉर्कर जिसे कहते हैं क्रिकेट की भाषा में। और ये 9वां विकेट गिरता हुआ अल्फा पैंथर्स का, और पारसवीरा पेविलियन की तरफ वापस जाते हुए। सनी दुलगच, तारीफ करनी होगी इस तेज गेंदबाज की, बहुत ही जबरदस्त एकाग्रता से गेंदबाजी कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है तीनों स्टंप के अलावा कुछ भी दिख नहीं रहा है। अर्जुन की आंख की तरह गेंदबाजी कर रहे हैं, अद्भुत गेंदबाजी मैं कहूंगा इसे। बहुत बेहतरीन ये यहां पर प्रयास सनी दुलगच का, तीसरा विकेट इनका। और ये चाहें तो इसी ओवर में इस मैच को भी खत्म कर सकते हैं। अभी भी 3 गेंदें बची हैं इस ओवर में और सनी दुलगच पूरा प्रयास करेंगे इसी ओवर में मैच खत्म करने के लिए। जी हां, और ये मैच तब पलटा जब यश दोषी का विकेट गिरा। सबसे खराब शॉट मैं कहूंगा इस मैच का उन्होंने मारा है आज, और उस शॉट के कारण उनकी टीम को खतरे में डाला उन्होंने। और यही हम चर्चा पहले भी कर रहे थे, और कभी कभी आपको कप्तान के तौर पर जिम्मेदारी अंत तक उठानी पड़ती है। भले ही आपके बाद भी बल्लेबाज हों, लेकिन सोचा समझा खेल नहीं खेला उन्होंने। यहाँ पर आराम से 1-2 रन लेके पहले सेट होते और फिर खराब गेंदों पर मारते, लेकिन ऊपर की गेंद पर मारने का प्रयास किया और आउट हुए। लेकिन उसके बाद की गेंदबाजी के तो क्या ही कहने। करण को एलबीडब्ल्यू किया सनी दुलगच ने, उसके बाद 2 बोल्ड मारे हैं इसी ओवर में। ज़बरदस्त गेंदबाजी, और एनोनिमस नाइट्स को लग रहा होगा आपकी मैच उनके पक्ष में आ चुका है। ये 9 गेंदों पर अभी भी
21 रन चाहिए, आसान नहीं है, लेकिन ये क्रिकेट का खेल है, कुछ भी हो सकता है। और एक बहुत ही बेहतरीन मैच यहाँ पर एनोनिमस नाइट्स और अल्फा पैंथर्स के बीच हो रहा है फातिमा क्रिकेट ग्राउंड पर, द सुपर लीग TSL में। तारीफ करनी होगी सारे खिलाड़ियों की यहाँ पर जो इस मैच को खेले हैं या नहीं खेले हैं, लेकिन इतना दबाव वाला मैच बहुत दिन बाद हमने देखा है। और ये बेहतरीन गेंदबाजी, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास यहाँ पर। विशेष सांगोई आए हैं नए बल्लेबाज, पुनीत साथिया हैं उनकी तरफ। दूसरी तरफ नॉन स्ट्राइकर एंड पे पुनीत गंभीर लिखा है, लेकिन असल में वो पुनीत साथिया हैं, क्षमा चाहेंगे हम दर्शकों से। अब ये देखना है कि विशेष सांगोई क्या करते हैं। हनी दुलगच विशेष को, और ये 4 रन, क्या जबरदस्त यहां पर ये मोड़, बाहरी किनारा लगा, मोटा किनारा बल्ले का, और 4 रन थर्ड मैन की दिशा में। आप देख सकते हैं, ये देखिए। और इस तरह के अगर क्षण मैच में आ जाएं तो मैच पलट सकता है। यही हम कह रहे थे, अनिश्चितताओं का खेल है, और ऐसा ही कभी किसी भी बल्लेबाज या गेंदबाज के साथ हो सकता है। इस बार वही हुआ, 4 रन मिल गए, और ये गया भी ऐसी जगह जहां पर आप कोई क्षेत्र रक्षक नहीं लगाते हैं। फिर से देखेंगे इस शॉट को, बेहतरीन यहां पर चौका मिला इन्हें, हालांकि ये चाह नहीं रहते वहां पर शॉट खेलना, लेकिन 4 रन तो 4 रन ही। अगली गेंद पर आते हैं, बढ़िया शॉट, और ये 1 रन के लिए तेजी से भाग रहे हैं और 1 रन ले भी लिया है। विशेष सांगोई बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए, और ओवर की समाप्ति 19 ओवरों के बाद स्कोर 108, 9 विकेट के नुकसान पर, और आखिरी 6 बॉल पे 16 रन चाहिए। ऐसा लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, 6 बॉल पे 16 रन, उस तरह का मैच हो रहा है। और क्या ये विराट कोहली वाली पारी खेल पाएंगे, अब देखना है। विशेष सांगोई बेहतरीन इन्होंने शुरुआत की अपनी पारी की। विशेष ने 5 रन बना चुके हैं सिर्फ 3 गेंदों पर, उन्हें 6 गेंदों पर अब 16 बनाने हैं। अगर पहली गेंद पर बड़ा शॉट लगाएंगे तो निश्चित तौर पर यह मैच बहुत ज्यादा रोमांचक हो जाएगा। जी हाँ, दिल थाम के बैठिए, और जबरदस्त मैच होता हुआ यहां पर, कांटे की टक्कर दोनों दलों के बीच में। जितनी भी तारीफ की जाए सारे खिलाड़ियों की उतनी ही कम है। और विशाल पांडे को दी गई है जिम्मेदारी अपना आखिरी ओवर डालने के लिए, और इस पारी का भी आखिरी ओवर डालेंगे विशाल पांडे। जबरदस्त गेंदबाज हैं, और विशेष सांगोई को कुछ खास करना होगा इनके विरुद्ध अगर 16 रन बनाने हैं तो। क्या मैच हुआ है, वाह। बहुत बेहतरीन यहां पर ये मुकाबला देखने को मिल रहा है। और ये शुरुआत बेहतरीन विशाल पांडे के द्वारा। विशेष सांगोई नहीं खेल पाए इसे, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद और डॉट गेंद। एक और बेहतरीन गेंद, वाह, तारीफ करनी होगी यहां पर विशाल की। दो डॉट गेंदों से शुरुआत की है, अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ है, एक बड़ा शॉट लगाएंगे तो। और ये एक और बेहतरीन गेंद, 3 गेंदों पर सिर्फ 1 रन दिया है, ये भी शायद बाय का रन है। विशेष सांगोई यहां पर विशेष नहीं कर पाए, और क्या जबरदस्त यहां पर बचाव किया है। 123 रन के स्कोर का एनोनिमस नाइट्स ने। अल्फा पैंथर्स अच्छा खेलने के बावजूद बाद में चूक से गए। 15 रन चाहिए 3 गेंदों पर, जो कि बहुत ही मुश्किल है, और ये वाइड होना चाहिए। जी नहीं, 2 गेंदें बची हैं और 15 रन। ये मैच अब अल्फा पैंथर्स की पकड़ से निकल चुका है।
इस मैच को एनोनिमस नाइट्स ने जीत लिया है। 2 गेंदों पर 15 रन नहीं बनते हैं क्रिकेट में अमूमन। हाँ, कोई नो बॉल वगैरह आ जाए तो बात अलग है। और ये हवा में खेला हुआ शॉट, 1 ही रन मिलेगा। 14 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। तो एनोनिमस नाइट्स ने इस मैच को अपनी पकड़ में कर लिया है, मैच को जीत लिया है। सिर्फ औपचारिकता रह गई है एक आखिरी गेंद डालने की। तारीफ करनी होगी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनोनिमस नाइट्स के कप्तान संजीव सुलारिया की और उनके पूरे दल की। इस तरह से उन्होंने इस छोटे स्कोर का भी बचाव किया। ये विशेष सांगोई का बड़ा शॉट, लेकिन ये आउट। और ये 20 ओवरों में इनकी पारी समाप्त। 110 के स्कोर पर अल्फा पैंथर्स आउट हो चुके हैं और ये मैच एनोनिमस नाइट्स ने 13 रन के छोटे से अंतर से जीत लिया है। और क्या जबरदस्त बचाव किया है यहां पर 123 रन के स्कोर का। जितनी भी तारीफ की जाए इस दल की उतना कम। हम धन्यवाद देते हैं अपने सभी साथियों का, सारे दर्शकों का, जिन्होंने इस मैच को देखा और हमारा उत्साह बढ़ाया। हमें प्रोत्साहित करते हैं आप हमेशा। और अब हम आपसे विदा लेते हैं। हमें आज्ञा दीजिए, अपना ध्यान रखिए और द सुपर लीग TSL के अगले मैच में आपके साथ फिर जुड़ेंगे। मैं आपका कमेंटेटर शालीन गुप्ता आप सभी से विदा लेता हूं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।